Hello students, I welcome you all on Narayana's YouTube channel। और ये मेरे हाथ में नीट का नीट का पेपर है जो 5/15 पे फिनिश हो चुका है। और पेपर एनालाइज हमने किया है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे आए हैं, मतलब अच्छे लेवल के आए हैं। और इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो सच में एनटीए ने इस पेपर को बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत की है और बहुत अच्छे सवाल डाले हैं। कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हैं और बच्चों को सॉल्व करने में कठिनाई भी हुई होगी और मज़ा भी आया होगा। अच्छी बात ये होती है इस टफ पेपर की कि जब अब रिजल्ट बनेगा, रैंक्स बनेंगे, तो थोड़े डिफिकल्ट साइड में, टफर साइड में जब पेपर होते हैं तो सेग्रीगेट करना रैंक्स पर अच्छे बच्चों को थोड़ा आसान और वाजिब होता है। तो देखते हैं, अब एक्सपर्ट्स पेपर को डिस्कस करेंगे और एक एक करके सवाल आपके सामने एक रैपिड डिस्कशन नारायणा के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और मुकेश सर है हमारे साथ, बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे इनके इनपुट्स हमेशा आपने नीट के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे। तो अब सर की राय भी जानते हैं इस पेपर के बारे में। मुकेश सर प्लीज ओवर टू यू। सर, बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बायो का पेपर बहुत इजी है और पूरा पेपर एनसीईआरटी से है, लाइन बाय लाइन। जो इंपॉर्टेंट लाइंस हम बताते हैं बच्चों को कि बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफिकल्ट होना बच्चों ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज इसलिए, अगर वो भी इजी आता तो वापस 720 और 720 वाले खूब बच्चों की लाइन लगी रहती। ये बहुत अच्छी बात है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं पर डिफिकल्ट आया। ये मतलब सिचुएशन की डिमांड थी कि मतलब एक बार पेपर लीक होने के बाद ये सिचुएशन की डिमांड थी कि ऐसा पेपर आना चाहिए कि जो अच्छे बच्चों के हमेशा साथ रहे। उसमें जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा क्योंकि बायो बहुत अच्छी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे आने से रैंक बहुत अच्छी आएगी। और रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मार्क्स आपको सिलेक्ट नहीं कराते, आपको रैंक सिलेक्ट कराती है। तो आप जैसा भी पेपर करके आए हैं, आप एनालिसिस में जुड़े रहिए। हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के साथ और जूलॉजी के टीचर अभी आपको थोड़ी देर में लाइव मिल जाएंगे, है ना सर? बहुत बढ़िया। तो आप देखिए सर के लिए, फिर उसके बाद तो जब तक शशि रंजन सर देख के आते हैं कि जूलॉजी वाले सर हमारे रेडी हो गए, तब तक मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, कोई भी ऐसा आप समझिएगा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर कुछ लोग पेपर लीक करा देंगे उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी मेहनत हमें हमेशा सिलेक्ट कराएगी। तो एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, तुम अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे। तो बच्चों, आप आपकी तरफ से हम आपके साथ हैं और जूलॉजी का डिस्कशन शुरू हो रहा है। थैंक यू। चलिए, आप जूलॉजी के कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि इस बार पेपर में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द क्लास नेम इज रेप्टाइल रिफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में ये रिटन है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यानी अब इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर जाएगा 4। ठीक है, तो 91 का आंसर जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ये जूलॉजी में आया हुआ एक सवाल है और ये लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन इन लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस। तो हमारे लेग में बोन्स के अरेंजमेंट से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो याद करिएगा, हमारे लेग में सबसे पहले फीमर होती है, फीमर के बाद नी कैप आती है जिसे हम पटेला कहते हैं, और उसके बाद टिबिया और फिर टार्सस आता है। तो इसका आंसर करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है लोअर लिम्ब का, तो पहले फीमर आती है, फिर पटेला है, फिर टिबिया है और फिर
टार्सस है, तो इसका आंसर चला जाएगा 4। अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग। तो फ्रॉग जब वाटर में होता है तो कैसे रेस्पायर करता है? दैट मीन्स इट रेस्पायर थ्रू स्किन। तो स्किन से ये रेस्पायरेशन करता है, क्योंकि लंग से ये रेस्पायरेशन कब करता है? जब ये लैंड पर होता है, यानी जब टेरेस्ट्रियल हैबिट शो करता है तब। तो यानी इसका आंसर चला जाएगा स्किन। तो जब फ्रॉग वाटर में होता है तो रेस्पायरेशन कैसे करेगा? स्किन से करेगा। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय में भी जो फ्रॉग है वो रेस्पायरेशन कैसे करता है? स्किन से करता है। अब एक सवाल 109 आया हुआ है और ये सवाल क्या कहता है? देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में मिलती है, सही है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कॉर्डेट का फीचर मेन है ही है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों में डॉर्सल साइड पे होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड पे होता है। तो यानी कि एब्सेंस ऑफ गिल, ठीक है, ये कॉर्डेट्स में फीचर नहीं मिलने वाला, क्योंकि गिल्स पाए जाते हैं। याद करिएगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं और ये कॉर्डेट का मेन फीचर होता है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें सही जाएगा। अब आते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब है 113 जो क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 113 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो देखिएगा, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 पार्ट होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बी वाला चेक करिएगा, क्या ये एफएसएस सिक्रीट करती है पिट्यूटरी? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी एफएसएस सिक्रीट होता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर क्या पिट्यूटरी से एमएसएच निकलता है, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और ये देखिएगा, इट डज नॉट सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोलैक्टिन यहां से सिक्रीट होता है। तो यानी कि इसमें आंसर चला जाएगा ए, बी और सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और डी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 115 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? ये याद करिएगा, ब्लड क्लॉटिंग का जो क्वेश्चन है ये वो है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा, पहला सवाल ये लिखा है कि फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन। क्या ये आपको सही लग रहा है? अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पता हो तो याद करिएगा, पहले फाइब्रिनोजन होता है, उससे फाइब्रिन बनता है। और यहां पे जस्ट क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, ये गलत हो गया। अब आइए अगला स्टेटमेंट, ब्लड कोएगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी। ठीक है, कोई इंजरी होती है तो ब्लड कोएगुलेट करता ही है। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, ये भी सही है, इसी के पॉलीमर्स होते हैं जो क्लॉट्स बनाते हैं। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिनोजन, ये भी सही है। तो यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट जाएगा इसमें, तो इसका आंसर चला जाएगा 1। अब आते हैं एक सवाल 118 जो कि मैच द लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। अब लिस्ट 1 में स्टार्च लिखा हुआ है, तो याद करिएगा स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है ये एनर्जी स्टोरेज के काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। एंटीबॉडी जो है ये फाइट इन्फेक्शन, कौन कहना वैलिन है? लैक्टिन है। और ग्लूट4 जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया। तो यानी कि अगर आप मैच करते हो तो अब देखिएगा, एंटीबॉडी हो गया फाइट इन्फेक्शन, यानी कि बी का 1 इसमें दिख रहा है और ए का 2 इसमें ही दिख रहा है। ठीक है, अब कौन कहना वैलिन का लैक्टिन किसमें? इसमें है, तो यानी और डी का है 3, यानी कि ये वाला सही है। तो यानी कि ये आंसर इसका सही चला जाएगा। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में आपने देखा होगा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल दी हुई है और उसमें ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कंसल्ट करते चलिएगा। अब पूछा गया है द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द ह्यूमन इज। तो ह्यूमंस में कुल कितने वर्टिब्रे पाए जाते हैं? तो याद करिएगा, अगर हम लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं, लगभग 33 होते हैं और वो अडल्ट्स में फ्यूज होकर 26 रह जाते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा
26। तो यानी कि वर्टिब्री के नंबर जो ह्यूमंस में है वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये इसका आंसर चला जाएगा। तो यानी 119 का आंसर नंबर हो जाएगा 4। एनसीईआरटी में आपको ये लिखा मिल जाता है। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड इन ए हेल्दी ह्यूमन इन पर मिनट। 1 मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से जनरेट होते हैं? तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, यानी इतनी ही हार्ट बीट ये जनरेट करा सकता है। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है वो कितनी हार्ट बीट जनरेट करा सकता है? याद करिएगा 70 से 75, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वही हार्ट बीट को इंडिकेट करते हैं। तो इसका नंबर भी 70 से 75 होगा। अब आते हैं अगला सवाल, यानी 1 to 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बातें करते हैं। ये सवाल बहुत आसान है। देखिएगा, इसमें से कौन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में देखिएगा, याद करिएगा, ब्रेन के ऊपर आपको अरेकनॉइड मिल जाएगा, ड्यूरामेटर मिल जाएगा, अरेकनॉइड मिल जाएगा, मतलब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, अरेकनॉइड, ड्यूरामेटर और पायामेटर। लेकिन पेरिकार्डियम याद करिए, ये हार्ट का हिस्सा है, यानी हार्ट के ऊपर का कवर है। तो ये जो आपको इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर चला जाएगा, आंसर है 1, यानी पेरिकार्डियम। तो अब आगे बढ़ते हैं और अभी बने रहिएगा, अभी और भी डिस्कशन बाकी है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं थोड़ी देर में। Okay, let's start analysis of botany section now. The very first question of botany is, how many turns of Kelvin cycles are required for the formation of 3 molecules of glucose? So it's a very conceptual question. All of first we see Rubisco is the main enzyme of Kelvin cycle. When a 5 carbon compound, that is RUBP, takes 1 CO2, there are 6 carbons in total. So 2 molecules of 3 carbon compound is produced. Now 5 carbons are required to regenerate. Okay, and only 1 carbon can exit for glucose formation. Clear? In 1 Kelvin cycle, only 1 carbon can exit for glucose formation. Now, glucose is 6 carbon compound. So, we need this cycle 6 times for the formation of 1 glucose molecule. So, for 1 glucose, you need 6 Kelvin cycles. And what is asked in the question? 3 molecules of glucose. So obviously there should be 18 Kelvin cycles required for the formation of 3 molecules of glucose. So answer will be 1. Okay. The very first question of botany is from plant physiology. The chapter is photosynthesis. Now let's see next question. Again, this question is from the photosynthesis chapter. Photorespiration reaction catalyzed by Rubisco is shown below. Okay, reaction is given here. RUBP plus oxygen, 3 there should be 3 phosphoglycerate. So in RUBP is a 5 carbon compound, and when it reacts with oxygen instead of CO2, then the 5 carbon chain breaks into 2 parts. One is a 3 carbon compound, that is a 3 phosphoglycerate, we can say 3 PGA, and another is 2 phosphoglycolate. That's why this cycle is also called glycolate cycle, or it is, because it is a 2 carbon compound, it is also called C2 cycle.
तो फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी जो फर्स्ट कंपाउंड है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट वो क्या है 2 कार्बन का होता है। तो यहां पर ये पूछा है कि जो ये X है ये क्या होगा, तो X क्या है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा इसका। तो 93 जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा 3 जाएगा। ओके, नाउ given below are 2 statements in gymnosperm. This question is from plant kingdom. Now in gymnosperm the male and female gametophytes remain within the sporangia. So this statement is incorrect because the female gametophyte, which is also called endosperm, remains within the sporangium, that is in the ovule. तो ओव्यूल में ही रहेगा फीमेल गेमेटोफाइट। ओके, इट रिमेन्स विद इन द मेगास्पोरेंजियम, बट it is microsporophyll, these are microsporangia. Pollen grains, that is male gametophytes, show pollination to reach to the female sporangium, that is megasporangium. तो इस तरीके से जो मेल स्पोर्स है, मेल गेमेटोफाइट है, वो स्पोरेंजिया से बाहर आएगा, फीमेल गेमेटोफाइट remains within the sporangium. So first statement जो है वो क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा. Now second, in gymnosperms seeds are not covered. Yes, seeds are naked, that's why they are called gymnosperms. Gymnos means naked, sperma means seeds. And why seeds are not covered? Actually seeds have a seed coat but they are not in the ovary. If seeds are in the ovary, then we can say seeds are covered by ovary wall or fruit wall, but this ovary is produced in angiosperm only. So the second statement is correct. Now in options, first statement is incorrect and second statement is correct. First ही चला जाएगा यहाँ, sorry, both statements are correct, both statements are incorrect. Statement 1 is incorrect and the second is incorrect. अभी एक बार चार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट वाला जाएगा एंड सेकंड इज करेक्ट। यस, इन 94 क्वेश्चन कहां से है? प्लांट किंगडम से है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है इनकरेक्ट दिया है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया है करेक्ट दिया है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? तो रेस्पिरेशन से है और थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें टच है पेपर में, अदरवाइज पेपर इजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 1 ग्लूकोज 2 pyruvic acids are produced. From 1 glucose 2 pyruvic acids are produced. So obviously from 206 glucose molecules there should be 412 molecules of pyruvic acid. So how many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? So the answer will be 1. Okay, let's see next question. Match the list 1 with list 2. तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, दो इसमें कॉलम्स को अपन को मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस को देख करके क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से है, फ्रॉम फंजाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेक्शन फंजाई से ये क्वेश्चन है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्लाज्मोगेमी। ओके, सेकंड होगा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कैरियोगेमी एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर इज फ्रॉम मियोसिस। ओके, तो सेकंड, थर्ड एंड 1 होना चाहिए ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड 1। लेट्स सी अगेन, मैच द लिस्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज प्लाज्मोगेमी, ए का 2 होगा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई दैट इज कैरियोगेमी, सेकंड का 3rd होगा। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स दैट इज मियोसिस, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सो आंसर विल बी 2। Mitochondrial inner membrane encloses. The next question is too easier. It is from Cell the Unit of Life chapter given in 11th NCERT. And what is asked?
which section is covered by the inner membrane of mitochondria? So let's see. This is mitochondria. It is outer membrane of mitochondria. This is inner membrane of mitochondria. This section between both membranes is called perimitochondrial space, and the whole material covered by the inner membrane is called matrix. So in this question, answer will be 2. Mitochondrial inner membrane encloses matrix. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves. So this question is from morphology chapter, and what is asked? It is asked that what is the arrangement of leaves called? So phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves, and we know different patterns are there. May be alternative patterns or opposite leaves may be there, or if more than 2 leaves are there, then it is called spiral. Okay, so this question is very easier. मॉर्फोलॉजी एक बड़ा सेक्शन है, 11th में ही ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन पूछा है. तो फाइलो जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड फाइलो मींस होता है फिल यानी कि लीफ से. ओके, एंड द टर्म टेक्सिस जो है उसे क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट बोलते हैं. तो फाइलोटेक्सी मींस क्या हो गया? अरेंजमेट ऑफ लीव्स. इसी में ही इटसेल्फ इसका जो है वो मीनिंग दिया हुआ है. ओके, तो एक नोड पर यदि एक लीफ लगती है, इफ वन लीफ इज एट द वन नोड, देन इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट पैटर्न. एक नोड पर यदि 2 लीव्स हो तो उसे क्या बोल देते हैं? ऑपोजिट बोलते हैं. और एक लीव्स पर यदि 2 से ज्यादा हो तो इसे क्या बोला जाता है? साइक्लिक और वर्ल्ड बोलते हैं. ओके, और ये सब कुछ किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल रिप्रेजेंट्स फाइलोटेक्सी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द मदर एक्सिस. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, अगेन 11th से क्वेश्चन है. द सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक गिवन है. इट इज कॉज्ड बाय प्रियोन्स. व्हाट आर प्रियोन्स? प्रियोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. ओके, तो ब्रेन में ही जीन्स होते हैं. इट समटाइम्स इट मे बी एक्सप्रेस्ड. जब ये एक्सप्रेस्ड हो जाता है तो ये एक एबनॉर्मल 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिस पर ना ही तो कोई इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, और ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं हीट के लिए. इवन 450 डिग्री तक भी इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये न्यूरो डीजेनरेटिव टाइप के डिजीज जो है वो कॉज करते हैं. ओके, सो इसका आंसर क्या चला जाएगा? मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियोन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय. अगेन जो क्वेश्चन है वो कहां से है? 11th से है. 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है. बिल्कुल इनिशियल जो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसी में ही सेल थ्योरी की बात की गई है. सेल थ्योरी क्या थी? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट. तो दो ये वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट था जो किसने दिया था? श्लाइडन एंड श्वान ने. एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये सेल थ्योरी की बात थी. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट साइंटिस्ट के इसमें नेम ही पूछा है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय श्लाइडन एंड श्वान. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following plant growth regulator promotes internode elongation? Okay, so plant growth and development वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ग्रोथ हॉर्मोन्स. तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? कैबेज के अंदर फ्लावरिंग की बात करी है. तो आप सभी जानते हैं कि कैबेज जो है उसका स्टेम जो है वो क्या है? वेरी शॉर्ट है एंड इट इज कवर्ड बाय लीव्स. दिस इज कैबेज. ओके, तो कंडेंस्ड शूट है, बट बिफोर रिप्रोडक्शन इट हैज टू बी इलोंगेटेड. तो इसकी जो इंटरनोड्स में जो इलोंगेशन है वो किसकी वजह से होगी? जिब्रेलिक एसिड जो है वो इंटरनोड इलोंगेशन का काम करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोल्टिंग इफेक्ट इसे बोला जाता है.
Okay, so which of the following plant growth regulator promotes internode elongation prior to flowering in cabbage? Cabbage हो चाहे कोई और प्लांट हो, यदि इंटरनोड इलोंगेशन का क्वेश्चन आता है या ड्वार्फ प्लांट को यदि इलोंगेट करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑलवेज आंसर जो है वो क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिव्यू अपन ले लेते हैं जो जो क्वेश्चन हमने देखे। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल्स चाहिए, तो 3 ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए? 18 साइकिल्स चाहिए। ओके, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय रुबिश्को इज शोन बिलो। तो इसमें एक रिएक्शन दे रखी थी और जो बचा हुआ पार्ट था केवल वो बताया था, तो उसमें हमें क्या बताना था? 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसी को ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, फिर 2 स्टेटमेंट्स दिए थे। जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम, फीमेल रहता है मेल नहीं रहता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड था इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर क्या चला गया था? 1। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड? 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 206 से कितने बनेंगे? 412 बन जाएंगे। क्लियर? मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए क्या जाएगा? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई के लिए क्या जाएगा? कैरियोगेमी। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर के लिए क्या चला जाएगा? मियोसिस। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। फाइलोटाक्सी किसका पैटर्न है, किसका अरेंजमेंट है? लीव्स का अरेंजमेंट है। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स and cell theory was formulated by Schleiden and Schwann. And which of the following plant growth promotes internode elongation prior to flowering in cabbage? That is gibberellic acid. Thank you. Let's start with chemistry and question number 46. Consider the following reaction and choose the correct option. CrO2 Cl2 is a mild oxidizing agent, so it converts CS3 or toluene to benzaldehyde, and benzaldehyde is also can be obtained by the hydrogenation of benzoyl chloride. Benzoyl chloride also gives benzaldehyde in the presence of palladium and BSO4, which is also known as Rosenmund reduction. So answer will be first. Next question is question number 47. The formula of tetraamine. Tetraamine means NH3 4. Tetraamine aqua H2, chlorido Cl, and cobalt is +3 -1. So overall charge will be +2. So to neutralize this +2, there will be 2 chlorine. So answer will be first. Next question is question number 48. The lanthanide having 4 unpaired electrons is. So according to their atomic number, when we write their configuration and eliminate 3 electron from S and D, then it gives 4 unpaired electron in HO +3. So answer will be first. And next question is, for an elementary chemical reaction, the Arrhenius plot is given below. If the activation energy is 6.64 kilojoule, remember it that this is 6.64 kilojoule. So first of all, convert it into joule, and this intercept gives value of ln A. So according to ln K equals to ln A minus EA upon RT. The value of ln A is 6 and ln K is E square per minute. So it will be E square
minus EA is 6.64 kilojoule. Kilojoule is converted into joule upon R value of R is 8.3 and temperature is T. So this will be 2ln E and its value of will be 1. So it gives 2 equals to 6 minus 6.64 into 10 to the power 3 upon 8.3 into T. On solving this equation, it gives T equals to 200 Kelvin. So answer will be 4th. Next question is question number 50. The green paramagnetic species formed by the reaction KMnO4. When KMnO4 is heated at 513 Kelvin, then it gives K2MnO4. It is plus 6. Convert from plus 7 to plus 6 and Mn plus 6 has one unpaired electron. So it is also paramagnetic behavior. So answer will be second. And next question is question number 51. Given below two statement. One is trans-butene. First of all, trans to butene upon treatment with Br2. So remember that this is trans and this is anti-addition. And on anti-addition of Br2 on trans-alkene, it gives TAM. Means trans-alkene on anti-addition gives meso product. So find out that this is meso or not. So on fixing of one carbon, if you rotate another carbon either clockwise or anti-clockwise, then Me comes below of methyl group. When this Me comes here, then H gives and Br comes here. So methyl overlap to each other, but bromine and hydrogen does not overlap to each other. So it is not a meso product. So this is incorrect statement. Statement second, cis-butene. This is cis-alkene and on treatment with alkaline KMnO4. Remember that alkaline KMnO4 gives syn addition. Alkaline KMnO4 gives syn addition. So cis-alkene and syn addition, this gives meso product. Syn addition on cis-alkene gives meso. So find out that this is meso or not. Again same pattern repeated. OH को rotate करेंगे यहाँ पे, H comes here and methyl comes here. So OH to the below of OH, H comes to the below of H and methyls come below of methyl. So it gives plane of symmetry and meso product. So statement second is correct. So check that statement first is incorrect. First is incorrect and statement second is correct. This both statement are correct, both statement are incorrect. First correct नहीं गलत है तो आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. One of the product formed in the following reaction. This is RMGX and this NH2 have acidic hydrogen and this negative behave as base. So when this negative attack on hydrogen, then it gives cyclohexane. So answer will be first option. Next question is question number 53. Given below are two statement. Heating NaCl with concentrated H2SO4 and MnO2. MnO2 is in +4 oxidation state and this MnO2 oxidize -1 to Cl2 and self get reduce Mn +4 to Mn +2. So Mn get reduced here, but statement is oxidation of Mn. So statement first is incorrect. Statement first is incorrect. Again incorrect. Statement second, heating NaI, same pattern repeated here that MnO2 which is in +4 oxidation state oxidize I- to I2 and self get reduce MnO4 +2 Mn +2 and statement says that result in reduction of Mn, so it is correct. So statement first is incorrect and second is correct. So answer will be statement first is incorrect and the statement second is correct.
So answer will be first. Next question is question number 54. Among the following option, the correct trend in the electron gain enthalpy. This is very famous question. And chlorine has greater than electron gain enthalpy than fluorine, then bromine and iodine. So answer will be fourth. And next question is question number 55. Given below are two statements. Statement first is this is chiral or not. Any complex having three bidentate ligand, any complex having three bidentate ligand is always chiral. So statement first is true, or we can say that correct. Statement second, trans, when we draw the structure of chromium and its transform, this is oxalato, again this is oxalato, and H2 and H2. You can check here that it has plane of symmetry. So this is not a chiral. So it will be incorrect. So statement first is correct and statement second is incorrect. Statement first is incorrect. गलत हो गया है. Statement, both statement correct. Both statement incorrect. Statement first is correct. True. Statement second is incorrect. True. So answer will be fourth. Okay, let's continue. Now we are having questions of physics. Start with the first question. A photon and electron, each of 20 electron volt energy, move in free space the ratio of linear momentum of electron to that of photon. Now this question is direct formula based. For electron, we can write electron momentum of electron is P electron is equals to, one second, is equals to under root of P electron is under root of 2m E energy of electron, and for photon it is P photon, that is equals to E divided by C. Now the question is given the energy of both electron and photon is 20 electron volt. For both it is 20 electron volt. We can directly write the value of energy E is equals to 20 electron volt here, or we can convert electron volt into joule and we can directly find the ratio of Pe to the Pp, that is P electron to the P photon, and that is equals to under root of 2me divided by E divided by C. Now we put the value of E as 20 electron volt, we convert into joule, 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19. By solving this, we can directly find the value of the ratio of electron to the photon linear momentum, that is equals to 225. So this is the direct question based on electron and photon linear momentum. Now the question number 2 is, water flows in a streamline motion through a horizontal pipe of circular cross section shown in the figure. There is a cross section of water pipeline and water is flowing in this pipe. The pressure difference between P and Q is 15 Newton. Now the next question is, water flows in a streamline through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure. The pressure difference of water between P and Q, the pressure difference between these two cross sections is 15 Newton a meter square. Now the pressure difference delta P, we can write delta P as rho GH, and the question has asked about
the volume flow rate, we can directly write the volume flow rate dq divided by dt. It is the volume flow rate and it is equals to under root of 2gh divided by a1 square minus a2 square multiplied by a1 a2. In the question, both area of cross sections at P and Q are given, that is 40 centimeter square and 20 centimeter square. We can directly find the value of GH from here because the delta P is 15 Newton per meter square. Now by substituting the values, we can directly find the volume flow rate as 400 centimeter cube per second. This question is slightly calculative, but you can directly find the value of dq by divided by dt. Now moving to the next question, we are having a good question here. A circular disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. There is a fixed center O and the disk is rotating in horizontal plane about this vertical axis. Now there are two given points at A and B and we have to find the angular momentum about the points A and B. This is a slightly tricky question because this body is purely rotating about its center. The angular momentum of this body is I center of mass into omega. It is independent of the points from A or B. That means the angular momentum about A and B is same. That's why the ratio of LA to the LB is 1. This is a tricky question. The angular momentum ratio about A and B is 1. Moving to the next question. Consider a long solenoid of length L and radius R. There is a long solenoid of length L, radius R. There are a small n number of turns per unit length. Mu naught is the permeability of free space, the self-inductance of the solenoid. This is a direct formula of solenoid self-inductance, that is equals to mu naught small n capital N into capital A. Where small n is the number of turns per unit length, capital N are total number of turns. We can directly write mu naught small n is small n and capital N we can write small n into length, because capital N are total number of turns and here small n are number of turns per unit length, and multiplied by area, circular cross section as area, pi r square. We can directly find the answer mu naught pi r square into n square into L. Answer is 2. The question number 4 has answer is 2. This is a direct formula based question. Now moving to the next question. The temperature of a metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta T. We are having a metallic sphere of radius capital R. Now we increase the temperature by a small amount delta T. The linear expansion coefficient of the metal is alpha. The question is asked about the approximate increase in the volume of the sphere. Now we can write the formula for volume. Volume is 4 by 3 pi capital R cube. This is the formula for volume. We can write delta V is equals to 4 by 3 pi. We can write R cube, differentiation of R cube as 3R square multiplied by delta R. Now the linear expansion coefficient of the sphere is alpha. We can write delta R as 4 by 3 pi 3R square multiplied by delta R. We can write R alpha delta T because question is given the linear expansion coefficient as alpha. Now 3 and 3 are cancelled. We can write the answer as 4 pi R cube multiplied by alpha into delta T. This is the answer of this question. 4 pi R cube alpha delta T. The answer is 4. Moving to the next question. Consider two circuits. This is again a good question. Now you have to check your basic concept, not formula based. You have to check your basic concept. There are two resistance, one and two resistance, both are having the same initial resistance R naught. They are connected in series. Now in the second case they are connected in parallel combination. Initially both are having the same resistance R naught, but one having a negative expansion coefficient alpha, another having a positive expansion coefficient alpha. Now they are connected in series and now they are connected in parallel. We have to compare the current before the temperature is increased and after the temperature is increased. For series combination, we can write R equivalent as R1 plus R2. That means कि for series combination R equivalent is again 2R0, which is the equivalent resistance before the temperature is increased. That's why in first case the temperature, after the temperature increase, current remains constant. So we can directly say IA remains constant. For first case we can directly write IA remains constant, and in the second case
When they are connected in parallel combination, the equivalent resistance will be R equivalent is equals to R1 R2 divided by R1 plus R2. This is the parallel combination equivalent resistance. We can write the parallel resistance as R equivalent as R1 R2, we can directly write R naught square 1 minus alpha square delta T square and divided by 2 R naught. R naught cancel. The value of new R equivalent in parallel combination is R naught by 2 1 minus alpha square delta T square. That means there is some difference, there is some subtraction from 1. That means the R equivalent decreases from R naught by 2. If R equivalent decreases, that means current will increase. That means for first case current remains constant, and for second case current will get increased. So option is IA remains constant while IB increases. I must say, if you attempt this question by the formula, you might get wrong. So this is a tricky question and this is a fundamental based question. Now moving to the next question. A beam of light falls on a metal surface such that photoelectrons are generated if power of light source start to decrease linearly with time t. If power decreases linearly, we can say number of photons per unit time decreases. That means the photo current will get decreased, and because we assume frequency is constant, so the stopping potential will remain constant. So question is simple. We have to draw the variation of photocurrent I and magnitude of stopping potential with time. So stopping potential remains constant and the current will get decreased linearly because power get linearly decreasing with respect to time, and we can directly say current directly proportional to intensity and intensity directly proportional to power. So answer of this question is option number 2. Moving to the next question, ideal Zener diode. There is an ideal Zener diode which is connected in reverse bias from a battery of voltage 5 volt. Negative input 5 volt. That means Zener diode is connected in reverse bias combination. Here the negative means is Zener diode is connected in a reverse combination. The breakdown voltage of Zener is 3 volt and this is 5 volt. And the question is asked about the potential difference across this resistance A and B, because this input voltage is greater than the Zener diode voltage. That means the output across A and B or the resistance will remaining voltage. That means the answer is 2 volt. So this is a direct question about the Zener diode. Now moving to the next question, in the measurement of viscosity. This is again a formula based question, but question is not about the direct formula, it is about a graph. So there is a question about the terminal velocity. We can directly say terminal velocity has a formula 2 by 9 sigma minus rho r square into g whole divided by neta. This is the direct formula of terminal velocity. Now the question is said the variation of terminal velocity with the ratio of density of a spherical ball to the density of liquid. Density of a spherical ball to the density of liquid, and there is a variation of density. Sigma is varying. That means we can rewrite the formula as 2 by 9 by commoning rho. We can write say rho multiplied by sigma minus rho into 1 r square g whole divided by neta. Now the graph is between V and sigma minus sigma by rho, and rho is a constant. We can say V as this 2 by 9 rho r square g by neta we can assume as a constant. Let us say this constant is m into x minus 1. There is a graph y is equals to mx minus m. This graph is a straight line with positive slope and negative y-intercept. There are 4 options of straight line in which one option is correct, which is this one second, because this has a positive slope and negative y-intercept. This is a direct question, but again this question is based on a graphical analysis. Now moving to the next question, there are 2 planets P1 and P2 have different radii R1 and R2. This is a direct question based on the formula of escape velocity, that is V escape is equals to under root 2 g m divided by r. That means V1 upon V2 is equals to under the root R2 divided by R1. Because question is given the both planet have equal masses, that means we can directly say V1 by V2 is equals to root R2 by R1, and the information given about the radii as R2 is equals to R1 divided by 2. And the question is asked about V2 by V1. So we can write V2 by V1 as under the root R1 divided by R2, and R1 has value 2R2. We can say V2 by V1 is root 2. So my dear students, the answer will be 4.
So this is the answer of question number 10 or root 2. Now क्वेश्चन नंबर 130 130 क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम परसेंटेज यहां पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन 65% के आसपास। तो अगर यहां पर इसका ऑर्डर देख रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस यहां पर एक ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये सेकंड ऑप्शन, यहां पर ए 65%, तो सेकंड वाला इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन मैच करवाने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट के लिए देखिएगा यहां पर जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल्स सीक्रेट करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। यहां पे देखा अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है और रिमेनिंग ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 के बाद 133, given below are two statements. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half, it is called radial symmetry. Yes, any plane means radial symmetry. Statement 1 correct है। Statement 2 देखिएगा, in phylum Echinodermata both adult and larva radial symmetrical. No, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। लार्वा यहाँ पर रेडियल सिमेट्रिकल, ये लार्वा यहाँ पर, ये एडल्ट और लार्वा दोनों के अंदर ये सिमेट्री सेम बता रहा है। इट मींस यहाँ पे सिमेट्री की बात कर रहा है कि सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होगी। नो, लार्वा के अंदर सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है रेडियल सिमेट्रिकल। इट मींस ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। देखिएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस, आंसर गिवन इज 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 135, इन फ्रॉम द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर cranial nerve 10 pair cranial nerve in amphibia and frog. It means आंसर जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, given below are two statement, one is labeled assertion and the other is labeled reason. ठीक है, assertion means in recombinant DNA technology lysozyme, lysozyme enzyme यूज होता है किसके लिए? बैक्टीरियल सेल के लिए, सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। यस, ठीक है, एंड सेलुलेज एंजाइम यूज होता है यहाँ पर प्लांट सेल के लिए। यस, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाला करेक्ट है। रीजन देखिएगा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिसरप्शन ऑफ सेल्स। यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लाइसोजाइम और सेलुलेज ये बैक्टीरियल सेल के लिए और प्लांट सेल के लिए इसने बात करी है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर आंसर जाएगा ए इज बोथ करेक्ट एंड, यहां पे आंसर जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस, तो यहां पे आंसर जाएगा 2nd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेथड ऑफ डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो यहां पे स्पर्म को इसने डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहा है ओवम के अंदर, ये वाला मेथड है यहां पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इट मींस आईसीएसआई मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, adaptive radiation in placental mammal and Australian marsupial leading to similarity between distant species. प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supials डायरेक्ट एग्जांपल है यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, डायरेक्टली फ्लोचार्ट बना हुआ है, यहाँ पर ये एग्जांपल है सीधा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पंज में एक्सचेंज O2 विद CO2। स्पंज मींस यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा बॉडी सरफेस से, तो यहाँ पे बॉडी सरफेस से होगा वो सिंपल डिफ्यूजन, और एंटायर बॉडी सरफेस O2 और CO2 का एक्सचेंज में हेल्प करेगा। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 141 का 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 143, given below are two statement. Statement 1, modern homo sapiens arose in Australia. No, ये incorrect है, ऑस्ट्रेलिया में अरोज नहीं हुए, एंड मूव अक्रॉस कंटिनेंट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिएगा, होमो सेपियंस अरोज अराउंड 75,000 टू 10,000 ईयर अगो। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिएगा स्टेटमेंट 1 यहां पर इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। इट मींस आंसर क्या चला जाएगा यहां पर? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एन इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर फॉर ट्रीटिंग पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में? तो यहां पे डायरेक्ट आंसर है इसका मोर्फिन। मोर्फिन पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस में पेन किलर की तरह यूज आता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवरिंग ऑफ ओवम एट ओवुलेशन। कवरिंग ऑफ ओवम डायरेक्ट है जोना पेलिसिडा लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एंड क्लोथ बस्टर। माइक्रोब से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहां पे डायरेक्ट आंसर होगा इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो क्लोथ बस्टर की तरह यूज आता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रेटेड टेस्टिस, एपिडाइमिस एंड वासा इफ्रेंसिया आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन्फेंटिबुलम इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नॉट ए पार्ट, आंसर हो जाएगा इन्फेंटिबुलम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय एलएस सर्ज। यस, करेक्ट स्टेटमेंट।
लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, यस स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवुलेशन होता हुआ रिलीज होता है और ऐसा होगा एलएस सर्च की वजह से, यस। स्टेटमेंट सेकंड देखें, ग्राफिन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम, यस ये यहां तक करेक्ट है, इनटू कार्पस ल्यूटियम एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, नो लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। तो स्टेटमेंट यहां पे 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से इनकरेक्ट है। तो यहां पे बात करेंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा यहां पर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओपनिंग ऑफ बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई, आरए और आरवी के बीच में यहां पे वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आरए और आरवी के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए Yes, students. Now we start botany. Which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1? You know, reaction center is of chlorophyll A molecule. Means chlorophyll A molecules, chlorophyll A 680 in PS2 and 700 in PS1. So the correct answer is chlorophyll A. Very easy. Then next question per Spinocyra class belongs to, yes, bryophytes. Next, which of the following plant growth regulator is used as herbicide? Herbicide means 2,4-D. Answer is second. Then genus represents, what is genus? Genus is a group of related species. In taxonomic hierarchy, you know that the lowest category is species and then genus. Means genus represents a group of related species. Answer is 4 and your marks is added 4. The plastid that stores xanthophyll is known as, xanthophyll is stored by, you know, amyloplast stores amylum. Amylum means starch. This is not correct. Then chloroplast for the food synthesis means no. Alleroplast stores protein, so it is not. Then stores xanthophyll, answer is chromoplast, means third option is correct. Next, smooth endoplasmic reticulum means there are no ribosome. If there is no ribosome, means no play role in protein synthesis. Its function is synthesis of lipid, means third one is correct. Next, which of the following are characteristic of prokaryotic cell? Prokaryotic cell means, yes, you know, 70S ribosome is made up of 50S and 30S subunits. So this is correct. Then they can have plasmids. Yes, plasmids है, fertility factor है, resistant factor है, call factor है बेटा. Then they contain mesosome. Yes, for the respiration, for the cell division. They have peroxisome. It is incorrect. So correct answer is A, B and C only. Understand? And you can add 4 marks. Match the following list. Cisternae is a part of, cisternae is part of mitochondria. Christie is part of mitochondria. Cisternae is part of Golgi body. Thylakoid is part of chloroplast. And phospholipid is part of plasma membrane, means cell membrane. Christie के infolding of mitochondria. Christie में infolding of mitochondria means A 2 के साथ जा रहा है. A with 2 means no. Then cisternae is part of Golgi apparatus, means B belongs to 4. B belongs to 4 in both. Okay. C, thylakoid is a flat membrane sac, means 1. C goes to with 1. Yes, answer is
3. Next. Which of the following statement regarding the photorespiration are correct? Correct. Once again, correct. Do not occur in C3 plants. No. Takes place in C3 plants. Then CO2 is consumed and O2 generated. No. Phosphoglycol is formed. Yes. You know, the first product is phosphoglycolate, 2 carbon compound. So it is known as C2 cycle also. Which of the following statements regarding photorespiration are correct? No synthesis of ATP and NADPH2 means C and D both are correct, and C and D means third one is correct answer. Next, arrange the following taxonomic categories in ascending orders. Ascending orders का मतलब means species, genus, then you know अपन आ जाएंगे family, class, order हो गया, then class, division and kingdom. So species at the first. Species at the first means G at the first. Answer is 4. Clear? There is no need to reach at each statement. Select the correct sequence of experiments that led to the gradual understanding of photosynthesis in green plants. This is technical question. You know, this question belongs to the experimental history in first page of photosynthesis in NCERT. You know, absorption spectra, chlorophyll A and B demonstrated at the last means at last upon, yes, role of air purification in first experiment. So correct answer is 3rd. Next, endoplasmic membrane system includes endoplasmic reticulum, okay, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. The answer is 2nd. Next, endomembrane system includes length of stem in time 0 is 20 centimeter. Arithmetic growth is ये. Thus, okay, the formula is LT is equal to L naught plus RT. This formula L naught is equal to 20, R is equal to 13, and then T is equal to 7. Formula 20 plus 30 into 7, 20 plus 210 means answer is 230 centimeter. Answer is 4. Then next, thank you. $56 नंबर कुछ क्वेश्चन में आया है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स इन अल्फा हेलिकल जो लिखा हुआ अल्फा हेलिक्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज राइट हैंडेड और यहाँ पे जबकि लिखा है लेफ्ट हैंडेड स्क्रूड इसलिए गलत हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैज 2 or more पॉलीपेप्टाइड यहाँ 2 or more नहीं बल्कि 1 ही होता है ओनली द प्रोटीन्स हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिव यहाँ टर्सरी से ही बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड बस यही आंसर सही है तो बीटा प्लेटेड में जितनी भी चेन्स आएंगे दे आर हेल्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू स्टेटमेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन whenever it is oxidized it is giving us COOH group. This is more acidic than benzoic acid. तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट गिव्स एन एसिड दैट वन इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड इफ इट इज रिड्यूस्ड देन इट गिव्स NH2 and CH3. CH3 has plus I and plus H effect. That's why it is more basic than aniline. Therefore, we can say statement both say first and second are correct.
which gives aniline as the major product. Aniline के लिए the correct answer, this one is half Mann's bromamide reaction. This gives aniline, and this one is this is hydrolysis. This is also giving us aniline plus CH3COOH. Therefore, correct answer is B and D only. 2 moles of an ideal gas undergoes free expansion. Free expansion focus करना है. Free expansion का मतलब हो गया it is not absorbing any type of energy. That's why you can say Q is equal to 0 or delta U equal to 0, since the temperature is taken as 300. For 300, delta U is equal to 0. Now delta S is equals to 2.303 NR log V2 by V1. 2.303 into 2 into R log 10 liter to 100 liter means 100 upon 10. Therefore, here we can say delta S is equals to 4.606 R. This is for system. Now delta S for surrounding. Surrounding is equals to Q upon T in minus sign, and Q is 0, therefore it is equals to 0. Therefore, answer will be the delta system is this, surrounding is this, that means first. The compound that cannot be obtained from aldol condensation. Aldol condensation मतलब होता है कि डबल बॉन्ड दो के बीच बनता है, मीन्स अल्फा एच निकलते हैं, डबल बॉन्ड दो के बीच हम फॉर्म कर सकते हैं. तो हियर देयर इज 2 अल्फा एच. These two can be released with this oxygen. Now H2 can be released to form this compound. It can be formed. We can get this compound also. Cis trans का ही difference है. But we cannot get this type of compound because double bond inside the ring. We cannot get this from aldol condensation. This can be obtained by simple aldol. It is crossed aldol. It is simple aldol. The complex which facial and meridional is shown by Ma3B3 or MAA whole AA dash whole thrice type of compounds. That's why here we can get CrPy3 and Cl3, which can show facial and meridional isomers. The number, this one we have to round off up to the 3 digit, but we have to drop 5. 5, after dropping 5, we will get 17.014. 4 will remain unchanged because this is even number. And here we will get, this digit will become 21.024 because when 5 is dropped, this is odd number which is added with 1 unit, and therefore the answer will become 4th, 17.014 and 21.024. The amount of carbon dioxide evolved, whenever we write its equation C4H10 plus O2 in excess, it will give us 4 CO2. Here 58 gram giving 4 into 44 gram. Therefore 116 gram will give 4 into 44 into 2 gram, which is equals to 352 gram. These are the graph of the Schrodinger wave equation. Whenever they are crossing the zero line, this is called as node. This is the node. There is one node. Here we are having 2 nodes. Here having only 1 node. And we have to get the 2 radial nodes, and therefore correct graph is C. Hence the answer will be 4th. The following carbocation is stabilized by the interaction. Now observe this carbocation. Whenever this carbocation is showing resonance, the bonds are shifting pi bond. Pi bond are shifting towards, these bonds are shifted towards this side, and therefore you can get this type of carbocation. Means we are using filled
pi orbital, and it also has hyperconjugation. Hyperconjugation is shown like this: CH and H. These bonds are shifted towards positive ion, means we are using filled sigma orbital. Means we are using empty sigma, filled sigma orbital and filled pi orbital. There is, I think, this is the typographic error. Here we are using filled, not empty. Filled and filled pi orbitals. The answer will be the 2. Thank you. We will come in the next one. L is equal to omega L xc 1 upon omega c, means this is equal to 2 into 10 raised to power 3 into 10 into 10 raised to power minus 3, and this becomes 1 upon 2 into 10 raised to power minus 3 into 25 into 10 raised to power minus 6. On solving this, these two are same, and XL is equal to XC is equal to 20 ohm. On the basis of this, the circuit is in the resonance, and therefore current I is equal to V naught, peak value V naught upon R. V naught is 220 and R is 100, and this becomes 2.2 ampere. Now for the next question, two identical inductors are connected in two different configuration, and here current I is flowing. Here current is I, means in this, and here current is I, and current is divided into two parts. For the first figure, we can write here VA minus VB is equal to L di by dt. And for the second figure, VA minus VB, equivalent L is L by 2, and total current is I, to di by dt, and the ratio becomes and for the first circuit and for the second circuit, ratio becomes what? 2, means answer is 1. Now next question, three identical capacitors are given, and here if the energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system are UP and UT. The UP, what is the potential difference across V? That is V by 2. This becomes half C V by 2 whole square, and UT becomes half. What is equivalent capacity of the system? This is C by 2 and this is C. The equivalent 3C by 2, 3C by 2 V square. On solving this, you are getting the result. Clear? Answer is 1. Now, next question. Conducting loop of finite resistance lies in XY plane. Here area is this. So phi is equal to BA. So BA naught 1 plus sin t. E is equal to
minus d phi by dt, and this becomes minus b a naught cos t, and power dissipated as the function of time, power p is equal to e square upon r. This becomes b square a naught square upon r cos square omega t, and cos square omega t 1 plus cos 2 omega t by 2. This is the function of cos 2 omega t. 1 plus cos 2 omega t, function is 3. 14th answer is 3. Now question number 15th. In an adiabatic expansion, the temperature of 1 mole of ideal monatomic gas decreases from 60 K to this. In adiabatic expansion, you know delta Q is equal to 0. Therefore, delta U is equal to minus W, and W is equal to minus NCV delta T. N1 CV 3 by 2 and R is 8.3, delta T is 10. On solving this, you are getting the answer like 124.5 joule. Now, next question is, consider a particle moving along the straight line whose position as a function of time is given by this. S is equal to alpha t square minus beta t plus gamma. This is equal to t square minus 6t plus 5. This is S. Here you want to find the distance because average speed is to be calculated. For average speed, first we check the time for zero velocity. So means v is equal to 2t minus 6 is equal to 0. At t is equal to 3, velocity becomes 0. So therefore, here distance and displacement both are different. Therefore, we take the help of graph, VT graph like this. Here slope is positive, intercept is negative. 6, 3, and at t is equal to 0, v is equal to here minus 6 and here plus 6. So here total displacement is, total distance is equal to 2 into half into 3 into 6. This is 18 meter and total time is 6. So V average is equal to 18 by 6. Answer is 3. Means option 4 is correct. Now, next one is, the following table present the part of electromagnetic wave, electromagnetic spectrum and their corresponding major application. You know microwaves are used in microwave oven. So for warming the food, UV rays are used to killing the germs. Gamma rays are used in cancer treatment and radio waves are used in communication. So here option is 4. Here option is 4. Now, next one is, an ideal gas is made of polyatomic gas. Here degree of freedom is translational plus rotational plus vibrational. This is equal to F, and gamma is equal to 1 plus 2 by F. Gamma is equal to what? 8 by 7, 1 plus 2 by F. Now, 2 by F is equal to 8 by 7 minus 1. This is 1 by 7. So here F is equal to 14. 14 is equal to 3 plus 3 plus
F dash. So here you get F dash is equal to 8. Means vibrational mode is 4. Now, next one is a unit positive point charge is taken slowly. Slowly means change in kinetic energy is 0. Here you consider only potential energy. So from A to B. From A to B. Now, what is the energy at A and what is the energy at B? Kinetic energy is 0. So here, in the process magnitude of total work done, W is equal to delta U. And delta U is what? UA minus UB. UA. This is the sphere having charge Q. So here energy becomes KQQ upon 2R minus KQQ upon 3R. This becomes KQQ upon 6R. Now put Q is equal to rho into 4 upon 3 pi R cube and K 1 upon 4 pi epsilon 0. You can get the result. And the answer is 1. Here the value of N is 1. Now, next question is current I0 flows through the metallic circular loop of radius R as shown in figure. Here, this is the thicker loop and this is thinner. If this is having resistance R, then this is having resistance 2R. Now, here current is divided. I and here current becomes I by 3 and here current becomes 2I by 3. Now, field. Suppose this is 1 and this is 2. At the center, field is B is equal to B1 minus B2. B1 is equal to mu 0 2I by 3 2R into 1 by 2 minus mu 0 upon 2R I by 3 into 1 by 2. On solving this, you can get the result and answer is 2. So the next question is, which of the following is not evidence for evolution? See, anatomical structure such as forelimbs is supportive evidence for divergent evolution, and second option is about analogous organ, and analogous organ is supportive evidence for convergent evolution, and fossil evidence, paleontological evidence is the best evidence of evolution. Now the option is 4, embryological support for evolution as proposed by Haeckel. This proposal was refuted by the careful study of von Wehr. So this should be the answer. Next question. Inactive form of Bt toxin is converted to the active form in the insect gut due to alkaline pH. So the answer is 2. Next, colostrum secreted by mother during initial days of lactation. It is cloudy colored milk and highly nutritious, very rich in IgA antibodies. So the dominant antibodies is IgA.
Which of the following disease is not sexually transmitted? See, genital warts is sexually transmitted disease, syphilis is sexually transmitted disease, but tuberculosis is not sexually transmitted disease, and gonorrhea is again sexually transmitted disease. Next question. And next question is match list 1 with list 2. See, transformation. This is transfer DNA to host bacteria. Cloning site. In cloning site, restriction enzymes are present. Selection. Antibiotic helps in selection, and ORI is origin of replication gene sequence, and this matching is found in A2, B1, C4 and D3. So the right answer is option number 2. Next question. A population of diploid organism is at Hardy-Weinberg equilibrium, and if the frequency of allele A is 0.1, the frequency of AA is, so A square, 0.1 whole square. The answer is 0.01. The next is sperm motility is due to tail, and tail movement is equivalent to flagellar movement. Next question is of assertion and reason. Forelimb of humans and bats are homologous. Very true, it is homologous. Why it is homologous? Forelimbs of human and bat have similar anatomical structure, similar bone pattern and similar origin. So reason is not only the correct statement, it is explanation as well. So the right answer is 2. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of assertion. The next question. Muscle contraction is initiated by signals sent by the central nervous system by the release of which neurotransmitter? The name of neurotransmitter is acetylcholine. So the next question. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? See, HCG, estrogen, progesterone, all are secreted by placenta, but LH is luteinizing hormone secreted from anterior pituitary. So 164, answer is 1. हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग बॉटनी के पेपर के एनालिसिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 122. क्वेश्चन बहुत आसान था, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन, और सबसे आसान क्वेश्चन बैक्टीरिया की शेप और साइज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया पर क्वेश्चन था. तो स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम बैक्टीरिया की कंडीशन. तो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो वर्ड आएगा वो किसके रेफरेंस में आएगा? हमेशा ही कोकस के रेफरेंस में. तो स्फेरिकल बैक्टीरिया होगी गोल. दीज आर द कोकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई वर्ड से. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, लॉन्ग इलोंगेटेड बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया. एंड द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी, एंड विब्रियो कॉलेरी इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, एंड नाम स्पाइरलम इज ए स्पाइरल बैक्टीरिया. नो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर मैच करें तो ए के साथ क्या जाएगा? सेकंड. और ए के साथ सेकंड का मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका. ए के साथ सेकंड ये भी नहीं होगा आपका आंसर. नाउ बी के साथ आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ. तो बी के साथ में फोर्थ की कंडीशन ये रही. आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट लिविंग वर्ड से. लिविंग वर्ड से इस बार अच्छे क्वेश्चंस दिए उन्होंने, 2 या 3 क्वेश्चन लिविंग वर्ड से दिए हैं, और ये आपके टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था. हालांकि इस क्वेश्चन में छोटा सा एरर एनटीए की तरफ से हुआ है, बट हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट फिर बात करेंगे. उन्होंने दिया अगेन मैच द कॉलम, फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम एंड ऑर्डर. इधर वर्ड है सेपेंडेल्स, डाइकोटिलेडनी, एनाकार्डियेसी, एंजियोस्पर्मी और मैंगीफेरा. सेपेंडेल्स, एल्स इज द सफिक्स फॉर ऑर्डर. तो सेपेंडेल्स एग्जैक्टली क्या हो गए यहां पर? ऑर्डर की कंडीशन. डाइकोटिलेडनी, डाइकोट एंड मोनोकोट्स आर द क्लास. तो डाइकोटिलेडनी क्या हो गया? क्लास की कंडीशंस हो गई.
फिर आ गया एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी इज ए फैमिली, और ये इसके साथ रहेगा, एनाकार्डियेसी फैमिली के साथ में रहेगा। नाउ फाइलम, देखो अब जो छोटी सी एरर हुई एनटीए से, फॉर प्लांट किंगडम हम लोग फाइलम टर्म को यूज में नहीं लिखते, यहां पर इसको लिखना चाहिए था डिवीजन। तो एज सच तो नहीं कहेंगे कि ये एग्जैक्टली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बट यहां फाइलम हम लोग किसको मानेंगे, एंजियोस्पर्मी के रेफरेंस के अंदर, और जीनस कौन रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका। नाउ मैच करो, देखें यहां पर ए के साथ क्या रहेगा, 3, ए के साथ 3 का ऑप्शन ही एक है सिर्फ, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, सेल डिवीजन और सेल वाले चैप्टर से इस बार अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल मिलाकर के नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चंस सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन के चैप्टर से मिल करके आए। और उन्होंने क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। अब यहां एरर हुई है बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करने की बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। बट यहां जो इन्होंने डिस्कशन में दिया है, मेटाफेज नहीं देकर के उन्होंने मियोसिस की स्टेज दी है। और आपको याद हो तो प्रोफेज 1, याद करो, प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एट द एंड मतलब डाइकाइनेसिस की स्टेज कंप्लीट हो चुकी, उसके पहले तो क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका, टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी। इट मींस क्रोमोसोम वहां पर फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड दिया है मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस, नहीं, मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस ये पूरी तरह से गलत है। मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस होता तो सही होता, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया आपका, गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था आपके मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं 1-2 और, लेकिन इस बार एनाटॉमी से किसी तरह का कोई क्वेश्चन एनटीए ने रीनीट के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं दिया है। अच्छा चलो यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैबेसी फैमिली, तो इसका मतलब ए के साथ क्या जाएगा, 4, और ए के साथ 4 के 2 ऑप्शन है, बट यहां पर ए के साथ में 4th नहीं है, तो यहां पर भी ए के साथ आंसर मे बी 1 हो, 3 हो या फिर 4 हो। बट बी के साथ देखो, देखे एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोमेटो, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर काउंट करेंगे। एंड नाउ बी के साथ सेकंड, तो बी के साथ सेकंड, यहां बी के साथ 3rd दे रखा है, ये हो नहीं सकता, आंसर या तो होगा 1 या फिर होगा आंसर 3। सी के साथ देखो, देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, आर्जिमोन के अंदर, और फ्री सेंट्रल मिलेगा डायंथस और प्रिमरोज के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, फंगस से क्वेश्चन जो था, याद करो फंगल एसोसिएशन। और हम लोग फंगस के 2 तरह से एसोसिएशंस को डिस्कस करते हैं। अगर फंगस किसके साथ में हो, इफ फंजाई फॉर्म एसोसिएशन विद एल्गी, और इफ फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और अगर हायर प्लांट के साथ हो देन वर्ड क्या देंगे इसको हम लोग, माइकोराइजा। क्या वर्ड दे देंगे इसको, माइकोराइजा की कंडीशन। और यहां किसके रेफरेंस में वर्ड देंगे हम लोग, बोलो लाइकेन। अगर फंगस एल्गी के साथ सिम्बायोटिक, इन्होंने पूछा भी यही है, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ए पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो इन दोनों का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। डेफिनेटली माइकोराइजा तब होता जब रूट के साथ होता, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन 7th और 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी करते, बायो का पेपर बहुत इजी आया है कंपैरेटिवली। 2-3 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने पूछा है नॉट ए प्रोकैरियोट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स मोनेरा में रखते हैं, माइकोप्लाज्मा अगेन मोनेरा में रखते हैं हम लोग, प्रोकैरियोट है, बीजीए भी है, बट फंगस इज ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो फंगस एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, फंगस इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन्होंने दिया है किसके रेफरेंस के अंदर, ये क्वेश्चन दिया आपका मॉर्फोलॉजी से, और मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन दिया उन्होंने सोलेनेसी फैमिली का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। फर्स्ट दिया फैमिली
फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही बात है। हम लोग फ्लावर्स के लिए क्या सिंबल यूज लेते हैं, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही। कैलिक्स, कैलिक्स हैव 5 सेपल्स एंड यूनाइटेड, यस। अब लोग ऐसे ही मेंशन करते हो, कैलिक्स के अंदर सेपल्स के नंबर क्या रहेंगे, 5, और सारे के सारे सेपल जो रहेंगे वो आपस में यूनाइटेड फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे। अगेन सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सही। एंड्रोशियम हैव 5 स्टेमन्स एंड एपिपेटलस, याद करो सी और ए, कोरोला और एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में नंबर क्या रहेंगे यहां पर 5, और यहां पर हम लोग एक ब्रिज लगाते थे, ये इसका मीनिंग क्या था, यहां पर पेटल्स एंड एंड्रोशियम या फिर कहें स्टेमन्स आर इन फ्यूज्ड स्टेट, इट मींस ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। एपिपेटलस कंडीशन है, ये सही है। बट देखो देखो, ओवेरी इज इंफीरियर, याद करो गाइनोशियम के नीचे लाइन लगाते थे आप लोग, इसका मतलब ओवेरी क्या है यहां पर, सुपीरियर कंडीशन में, तो अगेन ये वाला कौन सा स्टेटमेंट हो गया, गलत। तो क्वेश्चन पूछा था यहां पर उन्होंने कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कौन कौन से सही है इसके अंदर, ए बी एंड सी आर करेक्ट, डी करेक्ट नहीं है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, सेल साइकिल का क्वेश्चन दिया है, और उन्होंने बोला है सेल साइकिल की फेजेस और फॉर ए अडल्ट सेल के रेफरेंस के अंदर, मतलब सेल जब डिवाइड कर रही है तो कौन कौन सी फेजेस होगी, फर्स्ट इंटरफेज, सबसे पहले कौन सी फेज रहेगी, इंटरफेज की कंडीशन, और इंटरफेज में बाद में कौन सी फेज आएगी, एम फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, G1, S एंड G2 फेज, तो आंसर क्या जाएगा, G1, S, G2 एंड M। अब ढूंढो देखें G1, S, G2 और M, G1, S, G2 एंड M, तो ये वाली आंसर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है, जेनेटिक्स के कंपैरेटिवली क्वेश्चन रीनीट के अंदर कम आए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। और यहां दिया उन्होंने, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल, नन आर ड्वार्फ। याद करो हम लोग क्या मेंशन करते थे कि इन F1 जनरेशन जब हम लोग कैपिटल T एंड स्मॉल t गेट क्रॉस द F1 प्रोजेनी फाउंड्स heterozygous tall plant, all plants are heterozygous tall, it's true, कोई भी प्लांट यहां पर dwarf नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज assertion is correct, and the why all tall plants F1 have all the tall plants, because stem height, in a stem height the contrasting trait and tall being dominant, and the character which express itself in F1 generation is considered as dominant, and the character which does not express itself in F1 generation is considered as dwarf, that's why in F1 progeny all plants are tall। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहां पर, बोलो both the statements are correct and it is the correct explanation also, तो A and R are correct and R is the correct explanation of A also according to the answer key, the second option is correct। next one, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, एक बार देखने के अंदर इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम हुई होगी स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप लोग आईक्यू से सॉल्व करते हो तो हो जाता है यहां पर ये क्वेश्चन। और इसके अकॉर्डिंग देखो उन्होंने पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन नंबर 1 डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से सबसे ज्यादा है, इन्होंने बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वी हैव टू अरेंज दीज ऑर्गेनिज्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, वी स्टार्ट एट द क्वेश्चन फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर। तो स्टार्ट करो, यहां हाईएस्ट नंबर किसके मिलने चाहिए, प्लांट्स, फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनमें सबसे ज्यादा कौन से रहते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे ना वहां पर वो किसके रहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के। तो मैक्सिमम जो नंबर रहेंगे वो इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट्स को सबसे पहले रखेंगे। तो डी कहां पर आएगा, नंबर 1। चलो पहले देखते हैं डी कहां पर आ रहा है, नंबर 1। कहीं पर भी एक ऑप्शन के अलावा उन्होंने नंबर 1 पर दिया ही नहीं है, तो आंसर तो क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बट फिर भी चेक करो, देखें सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बाद में इन्होंने बोला प्लांट्स। यस, प्लांट्स के अंदर आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा सब कुछ इंक्लूड कर दिया आप लोगों ने। देन आफ्टर सी, फिशेस की डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, और बी दिया उन्होंने यहां पर रेफरेंस के अंदर बर्ड्स की, और फाइनली बोलेंगे हम लोग मैमल्स के नंबर वहां पर क्या रहेंगे, कम। तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बच्चों, रीनीट के क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं और अभी आपने क्वेश्चन देख लिए हैं 65 तक, उसके बाद से हम यहाँ शुरू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें 1:3 का रेशियो किस में आएगा, यानी कि जब हम इसको व्हेन वी डिसॉल्व दिस तो कहाँ पर हमें 1 और 3 आयंस डिलीवर हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें सिर्फ एक आयन मिलने वाला है, here only 2 ions available, here 3Cl minus and 1 coordinate box। तो यहाँ पे हमें 1:3 अवेलेबल है। 1:3 का ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है बच्चा, 4th नंबर अवेलेबल है, राइट। ओके, तो ये 4th नंबर अवेलेबल है, राइट, डन। ओके, we go for the next one, the standard electrode potential for the half cell reaction Fe3 plus E minus Fe2 plus। Here we can see desired equation Fe3 plus 1 electron, we find Fe2 plus. Is for this equation we have to find E naught cell. For this equation we have to find E naught cell. Okay, just wait for a moment. Okay, given equations हम यहाँ पे ले सकते हैं, बेटा। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, एक बार चेक करता हूँ मैं कि कहाँ पे ट्रबल हो रखा है इसमें। ठीक है, ओके ओके, तो हम बेटा यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन राइट हियर Fe3 plus 2 Fe, 3 इलेक्ट्रॉन Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन Fe, वी फाइंड हियर। हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए हमें ई नॉट वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो आपको पता है कि जो ई नॉट वैल्यूज है, जो ई नॉट वैल्यू है हमारे पास, उसे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी पर जा सकते हैं। तो बेटा अगर हमें ये डिजायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो हम इसके लिए एक डेल्टा G1 कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए डेल्टा G2 कैलकुलेट करेंगे, और डिजायर्ड इक्वेशन हमारे लिए डेल्टा G3 अगर मैं कहूँ तो डेल्टा G1 और G2 हमें Fe3 प्लस से Fe2 प्लस चाहिए, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा बेटा। तो ये डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 हो जाएगा। आपको पता है अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन डेल्टा G1 के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू माइनस NFe लेंगे हम, तो माइनस 3F इंटू E की वैल्यू 3 प्लस से Fe के लिए 0.04, वी कैन पुट हियर 0.04, और यहाँ पे बेटा हम लेंगे माइनस 2F इंटू, अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.44, राइट। तो दिस इज द 0.44। ओके बेटा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस 0.12 और यहाँ पे आएगा माइनस 0.88। नाउ अगर हमें यहाँ पे डेल्टा G3 रिक्वायर्ड है तो डेल्टा G3 के लिए हमें चाहिए होगा डेल्टा G1 जो कि आ चुका है 0.12, और माइनस इसको कर देंगे माइनस, यहाँ पे रहेगा ऑलरेडी, माइनस बेटा हमारे पास माइनस 0.88। बेटा हम यहाँ पे पाते हैं माइनस 0.76। ओके बेटा, क्लियर है ये। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, डेल्टा G3 इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, हमें ये निकालना है। यहाँ पे हमें डेल्टा G3 आ चुका है माइनस 0.76, n की वैल्यू इस केस में हमारे पास 1 है, f कट जाएगा, f यहाँ पे लगा रहेगा, देखो तो हमने f के टर्म में ही लिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। f कट जाएगा तो हम यहाँ पे बेटा E नॉट सेल ऑब्टेन करते हैं, प्लस में आएगा 0.76। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज गुड। ओके बेटा, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन इन पोटाश LM।
ratio of K plus and sulfate ions. तो potash Lm is K2SO4 Al2 SO4 thrice dot 24H2O dot 24H2O. ओके बेटा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो we have to find 2 potassium versus 3 and 1 4SO4 double minus. Okay, so here we find the ratio 2:4, which stands for 1:2, right? So 1:2 is where? 1 is for the second option, right? Okay, 1:2. Okay, it's clear. Now we go for the next one. Consider the following statement about the solutions formed by mixing two liquid. पहला, an ideal solution formed obeys Raoult's law. बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है. B, mixture of chloroform and acetone. Chloroform and acetone show negative deviation. We know it very well. बिल्कुल सही बात है. Mixture of aniline and phenol show positive deviation. Aniline and phenol पे जब हम जाते हैं तो aniline and phenol are both are opposite in nature. One is acidic and other is basic. They form a strong interaction and फोर्स टू शो नेगेटिव डेविएशन. तो कहीं न कहीं पर ये हमारा गलत हो जाता है. ओके, तो हमारे लिए क्या है, अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो ये ए एंड बी करेक्ट है. ओके, क्लियर, डन. वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. फॉर अ सॉल्ट XY विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द प्लॉट ऑफ लैम्डा m वर्सेस C हैज अ स्लोप ऑफ -90 SCM स्क्वायर. स्लोप का मतलब है, स्लोप अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें ये देता है, अगर हम डिबाई हकल इक्वेशन पे चलते हैं तो डिबाई हकल इक्वेशन से हम निकालते हैं बेटा, दूसरा पेन ला दीजिए, पेन कहीं पे होगा देखिए तो. ओके, डिबाई हकल इक्वेशन पे हम यहां पे आते हैं बेटा. हम यहां पे निकालने वाले हैं क्या, अगर हम यहां पे निकालने वाले हैं लैम्डा नॉट m. लैम्डा नॉट m a की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है 90 और लैम्डा नॉट m की वैल्यू प्रोवाइडेड हमारे पास कितना है बच्चा, 145. वी कैन गो. ओके, नाउ वी फाइंड लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m प्लस a रूट c. ओके, क्लियर है. तो हम यहां पे पा जाएंगे लैम्डा m प्लस a रूट c. लैम्डा m की वैल्यू 145 माइनस कितना आने वाला है बेटा हमारे पास 90 इंटू c की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 है नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, 0.01 है बच्चा, 0.01. ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 145 माइनस आने वाला है 0.9 के आसपास. ठीक है, क्लियर. तो बेटा हमारे पास ये अवेलेबल है, 154 आ जाएगा. कितना जगह हमारे पास ये 154, और ये वैल्यू किसकी है बच्चा, ये वैल्यू है पेन में क्या हुआ है, लैम्डा XY. ओके, क्लियर है. दिस वैल्यू इज लैम्डा XY, लैम्डा नॉट XY के लिए, जो कि इक्वल है लैम्डा XY इक्वल टू लैम्डा नॉट X, लैम्डा नॉट x प्लस लैम्डा नॉट y. हम बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 80 आ जाएगा. राइट. ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पोलैरिटी के लिए अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट क्लोरर हमारे पास एसिड मिल रहा है तो डी हाईएस्ट है, डी हाईएस्ट है हमारे पास. उसके बाद हम कीटोन को लेने वाले हैं C, then we go for alcohol B, and then we go for the left one, that is ether. तो DCBA, DCBA का ऑप्शन हमारे पास हाईएस्ट D, then C, then B, then A, we find 2. Okay, it's clear, done. Okay बेटा, the next one, according to crystal field theory, the correct order of ligands, according to crystal field theory, the correct order of ligands अगर हम चेक करते हैं तो correct order of ligands क्या आएगा, सबसे वीक लिगेंड्स यहाँ पर हमें लगता है Cl माइनस है और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे CO है, तो हम लेते हैं CO के बाद NH3 के बाद वाटर. द सेकेंड वन इज बेस्ट. ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन.
the amino acid that gives a red blood color treating with sodium nitroprusside, sodium extract with sodium nitroprusside. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होंगे, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स विल गिव blood red color with nitroprusside. And in these all four options, you know very well, methionine is sulfur amino acid, right? Okay, we go for the next one, bacha. In an acidic medium, 10 ml of 0.25 molar oxalic acid. Oxalic acid is given what? 0.25 molar, right? Titrated with KMnO4 solution. KMnO4 solution के लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड, ओनली वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 10 ml एंड हियर वॉल्यूम इज आल्सो 10 ml. सो वी हैव टू फाइंड मोलरिटी. हमें क्या कह रहा है? मोलरिटी चाहिए, राइट? तो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम किसी भी टाइट्रेशन में बेटा N1V1 इक्वल टू N2V2 यूज करते हैं. N1V1 इक्वल टू क्या यूज करते हैं बच्चा? N2V2 यूज करते हैं. और यहां पे ऑक्सैलिक एसिड के लिए N फैक्टर है यहां पे बेटा 2. N फैक्टर क्या है? 2 है. और अगर हम बेटा KMnO4 के लिए लेते हैं, then for KMnO4 N factor will be 5 in acidic medium. So here we can find oxalic acid's normality, and normality is equal to N factor into molarity, and molarity is given what? 0.25. Molarity is given 0.25, right बेटा? 0.25, यानी कि हम 0.5 ले सकते हैं. 0.5 is normality for what? For oxalic acid. तो with help of this we find the normality of KMnO4. तो N1V1 0.5 into 10 is equal to N2 we have to find, and then the volume is given. Volume is given 10 ml, and we have to find N2 for KMnO4, and this is the 5 by 10. 5 by 10 यानी कि हाफ आ गया हमारे पास बेटा. ये 0.5 नॉर्मल है, बट हमें ऑप्शंस किस में आ रहे हैं? मोलरिटी में आ रहे हैं. नाउ द मोलरिटी इज इक्वल टू बेटा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय N फैक्टर. और आपको पता है N फैक्टर क्या है? KMnO4 के लिए मैंने यहां लिखा हुआ दैट इज द 5, एंड वी हैव टू फाइंड 0.5 डिवाइड बाय 5. 0.5 divided by 5 is equal to 0.1. क्या है मतलब? तो बेटा हमें जो we have to find the molarity of KMnO4 0.1, और 0.1 is second option. We go for the second option. We go for the next one. The correct statement: aluminium has 5 valence orbital. आपको पता है aluminium 13th ग्रुप का है. यहां पर अगर हम जाएंगे तो 5 वैलेंस ऑर्बिटल हमें नहीं मिलने वाला है, राइट? बोरॉन हैज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 years. वी कैन फाइंड इट करेक्ट. बोरॉन की मैक्सिमम नॉर्मल कंपाउंड्स में आपको पता है कि वो BCl3 BH3 फॉर्म करेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर चाहिए उसको, तो वो BOH पे 4-. आपको पता है नॉर्मल जो रिएक्शन है, अगर मैं बोरिक एसिड का करवाऊं तो आपको इस प्रकार से कंपाउंड दिखाई पड़ता है. तो इट्स गुड. आई थिंक बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, राइट? वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, वी डन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अभी जस्ट मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बच्चों, आई होप आपका पेपर इस बार जो रीनीट वापस हुआ है काफी अच्छा हुआ होगा. तो चलिए हम आगे के 21 से लेके 35 न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा गया था और किस तरीके से हमें उनके आंसर करने थे. चलिए अपन 21 नंबर का न्यूमेरिकल लेते हैं सबसे पहले. तो 21 नंबर का न्यूमेरिकल कह रहा है, देखिए बेटा, कि एक एम मास का पार्टिकल है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और यहां पर एक एम मास का पार्टिकल लगा हुआ है किसी स्ट्रिंग के साथ, और ये एम मास का पार्टिकल इससे जो कोलिजन करता है वो इलास्टिक कोलिजन है. अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ये वाला पार्टिकल अपनी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देगा. तो आफ्टर कोलिजन इसके पास जो स्पीड होगी बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड लेके ही कहीं ना कहीं h हाइट तक जाता है. हमें वही चीज पूछी गई थी कि कितनी हाइट तक ये राइज कर जाता है.
तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन यानी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी mgh में, क्योंकि जितनी हाइट तक जाएगा मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0। तो यहां से बेटा अगर हमने इसको सॉल्व किया m से m कैंसिल, तो हाइट जो हमारे पास बनी वो बनी बेटा v²/2g, v क्योंकि 10 था यानी 100/2 × 10, तो ये बेटा आ गया 5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 5 यानी ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर बार एक इंपॉर्टेंट एंड रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जनरली न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं, तो उसी में से एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसने बोला हुआ है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है बेटा, और हमें बोला हुआ है कि जो मीडियम है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दे रखा है। तो ऑप्शन से चलते हैं कि हमें क्या क्या इसमें डिसाइड करना था। तो बेटा देखो इक्वेशन से ही पता लगता है कि डायरेक्शन देने का काम हमारे पास ये वाली चीज होती है k z। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा वेव का वो तो पॉजिटिव z एक्सिस है, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड बात करते हैं, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10⁸8। तो बेटा देखिए स्पीड निकालने के लिए हम डायरेक्टली c/√ε/r से लगा सकते हैं। अब क्योंकि फ्री स्पेस में 3 × 10⁸8 और ε/r क्योंकि 9 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो स्पीड 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है हमें ऑप्शन। आगे जाते हैं वेवलेंथ पे। अच्छा बेटा मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता, ये हमें पता है। तो सबसे पहले क्योंकि ओमेगा गिवन था 2π × 10⁻⁶, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बेटा ω/2π, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10⁻⁶। अब क्योंकि v = f लैम्डा, तो यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालते तो v/f। अब क्योंकि स्पीड हमें पता है 10⁸8 है, फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ है, तो ये आना चाहिए 100, और यहां बोला गया है कि जो वेवलेंथ है वो 300 है, तो ये गड़बड़ हो चुकी है और इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे, तो इसका ऑप्शन बेटा 3 होना चाहिए। लेकिन एक और चीज इस क्वेश्चंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बनाया हुआ है, यहां पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में यहां B0 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये E0 होना चाहिए था, तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं एनटीएस का क्या आंसर देता है। वैसे तो बेटा कैलकुलेशन के हिसाब से 3 आंसर जाना चाहिए, बट क्योंकि इनकरेक्ट ये भी दिख रहा है हमें, तो इसका आई होप शायद या तो बोनस होगा या इसको मोस्ट मान सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है, तो आंसर 3 जाना चाहिए। कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर 3 है, बट क्योंकि यहां पर भी एक मिस्टेक दिख रही है हमें, तो इसका आंसर 4 भी होना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा वेरिएबल पार्ट पे चला गया, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट दे रखा है हमें फ्रिक्शन का वो खुद भी एक वेरिएबल फॉर्म में, तो सीधी सी बात है जो फोर्स होगा वो भी एक वेरिएबल होगा। तो हमें वर्क डन निकालना है और वर्क डन दे रखा है इसने n/μ0 mgl के बराबर है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dx, जहां पर ये फोर्स लेना है। फोर्स फ्रिक्शन का होगा, फ्रिक्शन होता है μ × mg, तो μ × mg dx, लिमिट 0 से l, क्योंकि फ्रिक्शन 0 से लेके l के लिए। म्यू का रिलेशन रखते हैं, देखिए बेटा यहाँ 0 से लेके l, म्यू क्योंकि हमें कितना गिवन है μ0 - α(x), तो यहां रखा हमने μ0 - α(x) mg × dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए mg पहले बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट टर्म में, तो इंटीग्रेशन 0 to l μ0 dx, और यहां देखें तो माइनस α × x dx, और ये भी हो गया 0 to l। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखिए यहां पर इन्होंने अल्फा को भी μ0 की टर्म में निकालने के लिए गिवन है कि म्यू एल के लिए 0 यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम यहां से देखें कि म्यू एल पे अगर 0 है, तो अल्फा की वैल्यू बेटा डायरेक्टली μ/l लिखी जा सकती है। तो अल्फा यहां से μ/l, इसको जब हमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया तो यहां से n का वैल्यू बेटा निकल के आता है 1/2। देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। μ0 कांस्टेंट है, dx को अगर आप करते हो तो x, तो ये बनेगा हमारे पास l। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x dx को, तो x²/2 यानी ये बनेगा l²/2। तो यहां से अगर रखते हुए हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है n = ½ यानी इसका सही आंसर होना चाहिए बेटा 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ये रियल एंड अपेरेंट डेप्थ पे आया हुआ है। अब हमें पता है जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो d रियल n1/n2 होती है। अब बस n1 n2 सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एक और बात, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। टोटल अगर डेप्थ 5 है तो मिड पॉइंट के लिए 2.5 होगा। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट जो अपेरेंट डेप्थ आएगी, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है कुछ h1, तो अपन इसको d1 मान लेते हैं। रियल डेप्थ होगी बेटा 2.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1 से 1.25, 1/1.25। ये सॉल्व करने पे डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर आता हुआ दिख रहा है। सेकेंड टाइम पे अगर हम सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्योंकि है तो वो मिड पॉइंट पे 2.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.5 से 1.25,
इसको सॉल्व करते तो 3 सेंटीमीटर। अब हमें इनका डिफरेंस लेना और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। अब मैग्नीट्यूड लेने तो सीधा दिख रहा है बेटा 2 और 3 का मैग्नीट्यूड 1, इसका सही आंसर होना चाहिए बेटा 3, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये भी काफी मतलब एक तरीके से मान सकते हैं इजी एंड पे न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज Q है, रेडियस R है। अभी बोला यहां से सेंटर से 3 r दूर पे एक -Q चार्ज और m मास को रिलीज किया गया है। अब इसको रिलीज किया है तो ये जब सरफेस पे एंटर करेगा तो इसकी स्पीड पूछी गई है क्या होगी। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज नेगेटिव Q था, पोटेंशियल Q की कंडक्टर है, आउटसाइड पॉइंट पे पढ़ा हुआ है हमने KQ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी 3r इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv², वहीं से हमें स्पीड मिलेगा तो हाफ mv² और फाइनल पोटेंशियल क्योंकि चार्ज नेगेटिव है बेटा -Q और सरफेस पे पोटेंशियल हमें पता है KQ/r। तो यहां से सिंपली सॉल्व किया, देखो हमने हाफ mv², ये वाली टर्म इधर गई, इसको सॉल्व किया तो 2/3 KQ/r इंटू Q। अब Q की देखिए 2 इधर गया 4 और K को अगर हम यूज करेंगे 1/4πe0 तो 4π से 4 वो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें, तो टर्म में नीचे तो दिख रहा है कंफर्म में 3 है, एक पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका सही आंसर आएगा बेटा नंबर 4। इजी इक्वेशन है बिल्कुल, b को सॉल्व करना है अंडर रूट में ले जाके, 2 उधर जाके 4 होगा, K को 1/4πe0 यूज किया और सिंपली सॉल्व करके हमने देखा तो इसका आंसर आया बेटा 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बैंकिंग पे आया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन के अंदर 3 केसेस हम पढ़ते थे कि ओनली फ्रिक्शन हो, ओनली बैंकिंग और फ्रिक्शन बैंकिंग दोनों, तो ये सिंपल बैंकिंग पे न्यूमेरिकल है। सबने tan थीटा का रिजल्ट पढ़ा हुआ है बेटा, ये v²/rg। अब स्पीड कितनी कहता है वो 10, तो 10 × 10, रेडियस कितनी कह रहा है 50, g पता ही है 10, इसको सॉल्व किया तो 1/5 दैट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा नंबर 2। तो 26 न्यूमेरिकल का जो सही आंसर है वो है बेटा 2 tan इनवर्स 1/5। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल था कि अगर आप थॉट प्रोसेस लगा के करते इक्वेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था हमें, डायरेक्टली हमें ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है दोनों वो स्टार्ट यहां से होते हैं, अब उसमें से एक पार्टिकल इधर जाता है और एक पार्टिकल इधर जाता है और दोनों के लिए बोला हुआ है कि सेम एंगुलर स्पीड से जा रहे हो। अच्छा, फिर ये घूम के कहीं ना कहीं यहां पर मिलते हैं, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल फिर रिटर्न इधर जाएगा, ये इधर रिटर्न जाएगा। तो इनिशियली अगर हम देखें तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम नहीं चाहिए हमें, टोटल मोमेंटम चाहिए। तो शुरुआत के अंदर क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो मोमेंटम 0 होगा, बाद में जब ये यहां पर मिलेंगे इस पॉइंट पे तो भी अपोजिट डायरेक्शन है, मोमेंटम 0, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जब ये यहां पहुंचेंगे तो ये इधर होगा स्पीड, इसका स्पीड इधर होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन आ गई वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहां पर जो होगा मोमेंटम वो सबसे ज्यादा होगा। तो शुरुआत में मोमेंटम 0, लास्ट में 0 और कहीं ना कहीं बीच में मोमेंटम क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है न्यूमेरिकल नंबर का 27 का आंसर 4, कि इनिशियली मोमेंटम 0, बाद में भी 0 और कहीं ना कहीं बीच में वो मोमेंटम मैक्सिमम हुआ होगा, तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें डायोड दे रखे D1 D2 D3। तो अब देखते हैं कि इसमें पूछा गया डिप्लीशन रीजन के बारे में। तो हम आराम से जानते हैं कि if diode in reverse biasing then width of depletion region is very high, or in forward biasing width of depletion region is less, because D1 is in forward bias। तो ये D1 डायोड जो है D1 is in forward bias और D3 is in reverse bias। तो यहां तो हमें दिख रहा है कि इसकी width W3 सबसे ज्यादा होने वाली है, एंड इन केस ऑफ D1 इसकी width W1 जो कि सबसे लेस होगा। देखो D2 इज इन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है, दैट मींस यहां पर ये कहीं ना कहीं डायोड जो ओरिजिनल डिप्लीशन विड्थ पे था उसी पे काम करेगा, बट फॉरवर्ड में बिकॉज डिप्लीशन विड्थ इज डिक्रीजेस एंड इन रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन विड्थ इज इंक्रीजेस, एंड इन केस ऑफ D2 डिप्लीशन विड्थ इज रिमेन सेम, देन इज करेक्ट आंसर इज W3 देन W2 एंड देन W1। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 29। यहां पर भी देखिए लेंस ऑप्टिक्स हर बार एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है। तो फर्स्ट लेंस, क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ गिवन है बेटा कितनी 10 सेंटीमीटर और कॉन्केव की भी 10 है। तो फर्स्ट अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस लगाएं तो v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30, फोकल लेंथ इज +10, -30 +10। देन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -300
और ये -20, तो बेटा ये कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो अपनी इमेज बनाएगा वो 15 सेंटीमीटर इस साइड। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्केव लेंस यहां से 3 सेंटीमीटर पे और ये जो अपनी इमेज बना रहा है वो 15 सेंटीमीटर पे। तो इस लेंस के लिए वो इमेज एक तरीके से वर्चुअल मानी जाएगी। और 3 सेंटीमीटर अगर हम हटाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके लिए लेंस जो बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस, वो इमेज बना रहा है कहां पर ले जाके बेटा 15 पे, तो इस लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट कितना माना जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो सेकेंड हमारा कॉन्केव लेंस है, तो फॉर कॉन्केव लेंस V is equal to again we use UF upon U plus F। अब बिकॉज U जो होगा वो उसके लिए कितना हो गया 12, 15 तो कॉन्वेक्स के लिए था, 3 को हमने हटाया, फोकल लेंथ इज -10 अपॉन 12 और ये हो गया -10, तो -120 अपॉन 2, तो ये आ गया -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ बेटा लेफ्ट साइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो देखिए, एक बड़ा स्फीयर है रेडियस r और एक छोटा स्फीयर है रेडियस स्मॉल r। इस कंडीशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लगाना है। तो इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, पहले हम a एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, इसको a नाम दिया हुआ है। a एक्सिस के अबाउट खुद जो सॉलिड स्फीयर है उसका हो गया 2/5 mr²। और इस वाले के लिए अगर निकालें तो इसके खुद के एक्सिस के अबाउट 2/5 स्मॉल mr²। और क्योंकि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना जानते हैं हम लोग। तो प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा r प्लस r। ठीक है। सिमिलर अगर हम b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, तो अब b के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए जो स्मॉलर स्फीयर है उसके तो खुद के एक्सिस पर है ये, तो 2/5 स्मॉल mr²। और बिग स्फीयर के लिए खुद की एक्सिस पे 2/5 कैपिटल mr²। और हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये डिस्टेंस अगेन r प्लस r, तो कैपिटल M r प्लस r का होल स्क्वायर। अब इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो आ जाएगा 3। सॉल्व सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ यूज हुआ है, तो डायरेक्टली IA माइनस IB का जो करेक्ट आंसर है वो आ गया बेटा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल मॉडर्न फिजिक्स से, तो सिंपल रिलेशन हम पढ़ते हैं कि जो mv² अपॉन r होगा वो डायरेक्टली ke² अपॉन r²। तो यहां से देखिए रेडियस के एक रिलेशन को बना लेते हैं, बिकॉज वही सिंपल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो mv²/r ke²/r, r को सिंप्लीफाई किया तो ये बना ke² अपॉन mv²। के हम जानते हैं ये कितना है बेटा 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। मास भी गिवन है 9 × 10⁻⁻31 और स्पीड गिवन है बेटा रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर होने से हो गया 25.6 और ये 10⁻10। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नियरली जो ये बोल रहा है आंसर वो आना चाहिए बेटा 1, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल मीन फ्री पाथ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं सब लोग। मीन फ्री पाथ का बेटा जनरल रिलेशन 1/√2π d² × n पता है। तो अब देखिए लैम्डा a अपॉन लैम्डा b। अब क्योंकि ये इनवर्स है d और d² और n के, तो ये बनेगा db² nb अपॉन da² na। क्लियर है यहां तक बात? वेवलेंथ के लिए बोला हुआ है, देखो हाफ है a की वेवलेंथ, b की हाफ है, दैट मीन्स लैम्डा a अपॉन लैम्डा b इज 1/2। और आगे बोला हुआ है कि जो डायमीटर है गैस A का वो ट्वाइस द डायमीटर ऑफ B, यानी dA इज इक्वल टू 2dB। तो हमें dB/dA की जरूरत है, तो वो यूज हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ वैल्यूज रखते हैं, dB/dA 1/2 दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। nB/na अभी देख लेंगे कितना है। और वेवलेंथ का रेशियो क्योंकि 1/2 है, वेवलेंथ का रेशियो कितना है बेटा 1/2। तो इसको सॉल्व किया, देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/4 nB अपॉन na। तो ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है हमें, दैट मीन्स Na इज इक्वल टू nB/2, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 1। तो 32 तक आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है हमें दिख ही रहे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल SHM, ये पढ़े रखा है वैसे भी क्लासेस के अंदर कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको किसी लिक्विड में डाला, यहां से प्रेस करा के हल्का सा छोड़ा, स्लाइड डिस्प्लेस करा के, तो SHM करता है। अब इसका टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा रिलेशन, उसमें ध्यान है हमें कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रूट रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी गिवन लिक्विड के अंदर ये एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी डेंसिटी है, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, दैट मीन्स T1 by T2 इज इक्वल टू रूट टू बाई रो वन। और ये कह रहा है कि जब वो नेक्स्ट मीडियम में गया तो इसका ऑसिलेशन जो हो गया वो 2T हो गया, दैट मीन ट्वाइस हो गया पहले का, तो यानी कि जो T2 है वो 2T1 है, तो इसका मतलब यहां से हम T1 by T2 निकालें तो वो हो जाएगा बेटा 1/2, तो यहां रखते हैं वैल्यूज, तो 1/2 इज इक्वल टू रूट रो टू बाई रो वन, दैट मीन्स रो टू अपॉन रो वन बिकम्स 1/4, तो 1/4 इसका ऑप्शन 1, ये भी डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 34, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। अब ध्यान देने का यहाँ पे, फॉर साउंड वेव इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप। बेटा ओपन एंडेड पाइप के अंदर आपको पता है जो हार्मोनिक है वही नंबर ऑफ नोट्स मिलेगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक है तो फर्स्ट वाले केस के अंदर जो नंबर ऑफ नोट्स है वो डायरेक्टली 5। अब सेकंड केस पढ़ना, ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, यहां पर दिक्कत है, यहां पर आपने पढ़ा है ऑड मल्टीपल में चीजें चलती है, तो दैट मीन्स अगर बोला गया नाइन्थ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर भी 5 नोड ही बनेंगे क्योंकि ऑड मल्टीपल में चलता है। तो अगर सेकंड में भी बात करें हम क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में, तो नंबर ऑफ नोड्स यहां पर भी कितने होंगे बेटा 5। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख सकते हो, सिंपल फंडामेंटल हार्मोनिक आते हैं आपको सभी को 1 3 5 7 9, ऑड मल्टीपल में चलता है क्योंकि, तो यहां से देख रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स बिकॉज सेम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा रेशो 1, 5/5 बिकम्स 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए 35 नंबर न्यूमेरिकल, मास इफेक्ट न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है आपको। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, देखिए यूरेनियम है तो थोरियम और हीलियम में जा रहा है और इनके सबके हमें मास गिवन, तो आपको सिंपली पूछा गया है क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू बेसिकली वही बाइंडिंग एनर्जी से आती है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली पता है बेटा, मास डिफेक्ट से निकालते हैं और 931.5 से मल्टीप्लाई करते ही करते हैं उसको, जब ये मास एएमयू में गिवन हो। तो मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं, यूरेनियम का है 238.050, अब उसमें से हमें माइनस करना था जिसमें ये जा रहा है, तो 234 इसका मास डायरेक्टली गिवन है बेटा और मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि डायरेक्टली हमें थोरियम का मास गिवन है कितना है 234.043 प्लस हीलियम के लिए दे रखा है 4.003 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 931.5, जिसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है बेटा 3726। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, सारे न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। तो देखते हैं, इस बार पेपर काफी कैलकुलेटिव था, फिजिक्स काफी अच्छे एंड से पूछी गई थी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज काफी अच्छे से पूछा गया, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, कुछ के अंदर देखते हैं आंसर किस तरीके से पूछा जाता है। आई होप आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा बेटा। तो अब आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। Students, now we analyze the remaining of the zoology questions. So, this is the question, which of the following statement is correct about Plasmodium? Now, if you remember, Plasmodium is malarial parasite. Now, in malarial parasite life cycle, there are two hosts, human as well as the Anopheles mosquito. Now, fertilization takes place in mosquito gut. So, this is correct. Now, reproduces sexually in liver cell. Now, when you talk about the liver cell as well as the RBC, it means you are talking about the human here. So, in human, there is only a sexual cycle. It's a sexual cycle takes place in human. So, here since it's written sexual, so these two statements should not be correct. Now, in the fourth option, it's written gametocyte develop in mosquito gut. Now remember, gametocytes, they are actually a kind of gamete mother cells. Now gamete mother cells, they are produced in human blood. In human blood, certain RBCs containing merozoites, the merozoites, they become gametocytes later on. So one can say that this statement is wrong, and here they have asked about the correct statement. The first one is correct. Next is, which of the following statement about the reabsorption process in Henle's loop? We need to choose which of these statements about the reabsorption process in Henle's loop are correct.
The first one, the descending limb of loop of Henle is permeable to water. So this is correct because descending limb, it is permeable to water, but almost impermeable to electrolytes. This is true. This is correct. Then urine gets concentrated in Henle's loop. This is a kind of correct statement because the longer loop of Henle is, the urine become more and more concentrated. So one can say this statement is also correct. Reabsorption of sodium and water takes place in Henle's loop. Though very little of this takes place because in NCERT it is written that the role of Henle's loop in reabsorption, it is very less. So minimum role of loop of Henle, though it's minimum, it is there. So one can say it is partially correct. So loop of Henle, reabsorption of Na and water takes place in loop of Henle, it's a little, one can say. This happens less. Then active or passive transport of electrolytes occur in ascending limb of Henle's loop. Now remember this, that ascending limb of Henle's loop, it is totally impermeable for water, but it is permeable for NaCl or electrolyte. And there are two segments, one is thick segment, another is thin segment. In the thick segment, it takes place by active process. In the thin segment, it takes place by passive process. So this is 100% correct thing. So if you go by these four statements, one can say all A, B, C, D, all are correct. Though this C statement is not completely correct because in NCERT it is written that Henle's loop has minimum role in reabsorption process. And if you go by the options, there is no option in which we can see that we can choose all A, B, C, D. So if you want to remove one of these statements, one can remove the C statement and can take this A, B, D as the correct statements. Though C is also correct. So one can challenge this. But as you can see here, reabsorption takes place in very little amount. So we just skip this and take A, B, D as the correct options. Next question, which of the following is correct order of arrangement of vertebrate column? So the names of vertebrae are given on the basis of their location or position in the body. So the neck vertebrae are called cervical. Then in the chest region, the part of vertebral column which passes can be called as the thoracic vertebrae. Then comes the part where abdomen and the chest, they meet. That portion can be called as lumbar. And finally the sacral. So if you go by this, that first one is cervical, then thoracic, then lumbar, and finally sacrum or sacral. This should be the correct answer. Next, statements are given. Plasmids are autonomously replicating DNA. We know they are autonomously replicating because plasmids have got ORI site. Origin of replication sequence is there. So that's why this statement is correct. Statement 2 says plasmids are extra chromosomal DNA. So this is also true. Plasmids, they are extra chromosomal because they are not the part of chromosome. So this is also correct. So both statement 1 and 2 are correct. We can take 2 as the answer. Natural selection can lead to its stabilization. This is correct. Genetic drift, not. Then directional change can take place. Disruption selection can also take place. Why genetic drift cannot be chosen? This is simply because in natural selection, the genes which are favorable, the alleles which are favorable, their number increases generation after generation. But genetic drift is a chance event, as a result of which this genetic drift would not help in increasing only the favorable alleles. Sometimes chance event can help in increasing the unfavorable alleles. So that's why genetic drift cannot be chosen. A, C, D should be the answer. Next question is, match list 1 and 2. Growth hormone, luteinizing hormone, vasopressin and oxytocin are given in one column, and here reabsorption of water and electrolyte, contraction of uterus, acromegaly, which is actually a kind of disorder, and ovulation are given. Now excessive growth hormone leads to acromegaly, luteinizing hormone is responsible for ovulation, vasopressin causes the reabsorption of water, and oxytocin
is responsible for contraction of uterine muscles. So 3, 4, 1 and 2. 3, 4, 1 and 2. It's given. So this should be the answer. Which of the following are secondary lymphoid organs? Now primary lymphoid organs include primary, thymus is also primary. Tonsil and spleen, B and C, these are secondary in nature. So one can say B and C. Yes, third option B and C are given here. So this should be the answer. Then during PCR, primer bind to DNA strand in which particular step? So remember, this is not a step of PCR. PCR has 3 steps. Denaturation, this step number 1, in which the 2 strands of DNA, the sample DNA, they just get separated. Then the second step is this one, in which primer, 2 sets, they bind. So 2 sets of primer, they bind to 3' end of template strand. So one can say that this should be the answer, because in extension, Taq polymerase or such type of thermostable type of DNA polymerase, it just add nucleotide to extend the chain to form the new strand. So answer should be aniline. And with this, we have finished. Thanks for joining. हेलो बच्चों, तो बॉटनी के फर्दर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने जो आ रहा है उसमें पूछ रहा है, फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स। अब आपको पता है ब्लड ग्रुप O की बात कर रहा है, तो O के अंदर I और I आपको देखने को मिलता है। ये I जो आया है ये किससे आया बेटा? फादर से। ये किससे आया है? मदर से। तो ऑब्वियसली बात है, आप ऐसे जीनोटाइप को देखिए जिसमें दोनों में आई हो। क्या इधर आपको दिख रहा है? अच्छा, इसके पास, फादर के पास नहीं है लेकिन मदर के पास है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है? 1। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं बेटा वो डाइकॉट के अंदर होते हैं। तो आप देखिए इनमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये मोनोकॉट है, लेकिन फर्स्ट वाला क्या है? डाइकॉट। तो आंसर क्या हो जाता है? P। अगला, गिवन बिलो असर्शन बोल रहा है, abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है? goats were more efficient at browsing than abundant tortoise। बिल्कुल सही है। देखिए, गोट्स की फीडिंग एफिशिएंसी, ग्रेजिंग स्पीड बहुत अच्छी थी, इसी कारण से अबिंगडन टॉर्टॉइस को खाना ना मिलने के कारण अबिंगडन टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर वुड बी सेकंड। नेक्स्ट, which of the following in female gametophyte of a angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the egg। बेटा आपको पता होगा कि पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए फिलिफॉर्म एपेरेटस काम में आता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड्स में। तो देखिए, पोलर न्यूक्लियस नहीं, एंटीपोडल नहीं, सिनर्जिड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव लैक ओपेरॉन इज करेक्ट। ओके, करेक्ट बोल रहा है बेटा। गैलेक्टोज कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन। नो, गैलेक्टोज नहीं है, लैक्टोज होता है। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस का मतलब है कि लगातार एक्सप्रेस होता रहता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये लगातार एक्सप्रेस होता है। लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर। नहीं, ये एक्टिवेट नहीं करता, ये डीएक्टिवेट करता है। जीन आई, जेड, वाई एंड ए शेयर सिंगल कॉमन प्रमोटर। तो आपने डायग्राम में देखा होगा कि यहां पे आई जीन का और जेड वाई ए का दोनों का प्रमोटर अलग अलग होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ये और ये गलत हो जाते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड। अगला, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ 0.002 per unit time and the per capita death rate of 0.002 per unit time. The expected number of cells after 10 generation is। Okay, this is a very good question। देखिए, यहां पे बोल रहा है कि 10 मिलियन सेल की पॉपुलेशन है, बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है बर्थ रेट 0.002 है,
अच्छा, और डेथ रेट भी 0.002 है, मतलब पैदा जितने हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो चाहे कितनी भी जनरेशन बाद की बात कर लो बेटा, पॉपुलेशन तो उतनी ही रहेगी ना। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। Which of the following are primary consumer in a food chain? अच्छा, आपको पता है बेटा प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। और इनको खाने वाले डायरेक्टली वो कौन होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। असर्शन बोल रहा है द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है। और हम लोग इसको रियलिस्टिक इसलिए समझते हैं बिकॉज रिसोर्सेज जो है बेटा वो क्या है? फाइनाइट है। तो ये भी एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है असर्शन का। तो आंसर वुड बी सेकेंड। नेक्स्ट बोल रहा है मैच द कॉलम बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड। हार्म्ड है मतलब माइनस माइनस का रिलेशनशिप। आप लोगों को पता है बेटा कंपटीशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें माइनस माइनस होता है, यानी कि पहला तो हो गया थर्ड। बोल रहा है वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। वन इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। बेटा ये पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों के अंदर होता है। तो अगला है फर्स्ट। इसके बाद बोल रहा है बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, मतलब प्लस प्लस का रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज सेकेंड। वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर हैज नो इफेक्ट। बेटा ये हो जाता है कमेंसलिज्म, यानी कि प्लस जीरो का रिलेशनशिप। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 आंसर वुड बी 1। If the diploid chromosome number of typical angiosperm is 36, okay, diploid condition में 2n is equals to 36 दे रखा है बच्चों। What would be the chromosome number in endosperm? Now you guys know that angiosperm में जो endosperm होता है वो बेटा होता है 3n कंडीशन में। 3n आपको पता है 2n is equals to 36 है, then n is equals to 18 होंगे। तो 3n is equals to कितने हो जाएंगे बेटा? 3 into 18, यानी कि आंसर वुड बी 54। Which of the following enzyme synthesizes precursor of mRNA? बेटा molecular basis of inheritance का क्वेश्चन है। precursor of mRNA, पहले तो बताओ ये होता क्या है? ये होता है HNRNA। अब HNRNA और mRNA इसको सिंथेसाइज कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है? बेटा ये करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। आगे बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बायलोब्ड एंजियोस्पर्मिक एंथर? अरे ये तो डायरेक्ट लाइन है। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म का एंथर जो होता है बेटा वो बायलोब्ड एंथर जो होता है वो डाइथीकस होता है, यानी कि 2 थीका होती है इन ईच लोब। देन आंसर वुड बी सेकेंड। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमें ढूंढने हैं। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। हाँ बिल्कुल सही बात है। एनर्जी पिरामिड जो होता है बेटा वो हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड हो नहीं सकता। सो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 1% लॉ, नो, 10% लॉ फॉलो करता है, तो ये गलत हो जाता है। ए और बी करेक्ट है। आंसर वुड बी थर्ड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। बेटा वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम XO कंडीशन आपको याद होगा टर्नर्स में होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। उल्टा दे रखा है, ये इसके लिए इनकरेक्ट है बेटा। डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्फेनोप्सिडा क्लास बिलोंग टू एनसीईआरटी। बेटा टेरिडोफाइटा की सबसे लास्ट लाइन दे रखी है स्फेनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स। तो इसी के साथ खत्म होता है बॉटनी का डिस्कशन। प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Let us start with the question number 76.
In this question number 76, question is asked, among the following, the compound having conjugated double bond. Conjugated double bond, if you look at the options, hepta 1,6 diene, there is no conjugate double bond. If I talk about hepta 1,3, so this is the structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is first, then you have third one. So in this case, we can see that at these double bonds are conjugated. So therefore, answer of question number 76 is 2. Coming to next question, question number 77, which is asked from the chapter chemical kinetics. Question says 2A gives B is a zero order reaction. So it is a zero order reaction where K equals to 1.0 moles per liter per minute. If the initial concentration of A is this, so initial concentration and the value of K is given as 1 mole per liter per minute. Then the time taken to complete the 75% of the reaction will be. So they are asking about the time which takes to complete 75% of the reaction. So according to the given reaction, so this can be written as minus dA by dt equals to, but because coefficient is given as, here stoichiometric coefficient is 2, so this is going to be 1 by 2 minus 1 by 2 equals to K. So this is going to be minus dA by dt equals to 2K, which comes about, we can write it in terms of A naught minus AT equals to 2 KT. Okay, so A naught is the initial concentration, AT is the concentration after the completion, 75% completion of the reaction. So after 75% completion of the reaction, 25% of the reactant will be left. So AT is, A naught is 2, AT is going to be 0.5 and this is 2. The value of K is given as 1. So time, we can calculate it as 1.5 divided by 2, which is actually going to be 0.75. So answer for this is 0.75. So now coming to next question, the correct order of solubility of the given salt in the water at 298 Kelvin is. So salts are given and their KSP values at 298 kelvins are given. So from this information we will calculate the value of solubility and we will arrange them. So for AgBr, if we take AgBr solid, then it is going to be Ag plus Br minus, so solubility, so KSP is going to be S square. So solubility here is root of KSP. Similarly, for zinc, ZnOH taken twice will get S, KSP equals to 4S cubed. So from where? Here we can calculate the solubility of ZnOH taken twice. Similarly, for Hg2Cl2, we can calculate the value of KSP. We will calculate the value of solubility as 4S cube because Hg2Cl2, Hg2 2 plus Cl minus. So this will be 2Cl minus. So this is S, 2S. So KSP will be S, 2S whole square. So this will be 4S cube. So similarly, if we after calculating the value of solubility and arranging them, we'll get the answer as first. Coming to next question, the correct decreasing order of oxidation state. So it's a very easy question. Here we have to calculate the value of oxidation state and arrange them in the decreasing order. So accordingly, if you find out the oxidation state of nitrogen here is +5 and aluminium is +3 and sulfur is -2. So this is in the decreasing order, +5, +3 and -2. So answer is
third one. Coming to question number 80, which is from thermodynamics, and seems to be a very good question. Consider the reversible process for 1 mole of an ideal gas as shown in the figure. W1, W2, W3 and W4 represents work done in the process. So they have just said ki this is W1, this is W2, this is W3, this is W4. In the process 1, 2, 3 and 4 respectively, delta U2 and delta U4. For the process 2, they have given you the change in internal energy as delta U2, and for fourth process, they have given you the change in internal energy as U4. Are changes in the internal energy for the process 2 and 4 respectively, and they have asked you to use the value of R equals to 2 calories per Kelvin per mole. So here there are 4 processes given. So first process is, because temperature is constant here, this is a process, isothermal process. Coming to second process, this is a adiabatic process. Third process is again isothermal compression, and fourth process is adiabatic compression. So these processes are given, and we know that in isothermal process, in isothermal reversible process, the work done equals to minus nRT ln V2 by V1. Okay, so accordingly, if we calculate W1, which is a isothermal reversible process, is actually minus number of moles is given as 1 and the value of R is given as 2. So 2T ln, what is V, here it is V2 by V1. Similarly, calculating the value of W3 is again an isothermal, but the W3 is isothermal compression, 2T ln V4 by V3. Adding W1 and W2, we will get the answer second. So for question number 80, answer is second. Now coming to question number 81, assertion reason. Assertion is given as for an ideal solution formed by mixing liquid P and Q. So there are two liquids which are mixed, and after mixing we are getting the value of delta H equals to 0 and delta V equals to 0. Whenever delta H and delta V is 0, this is an what? Ideal solution. And yes, first option is what? Assertion is true. Coming to reason, no interaction occurs between P and Q, which is actually not correct, because in case of ideal solution, interaction do occurs, but the interaction between P and Q, interaction between liquid P and liquid Q is similar. It's similar to the interaction of PP and QQ. So in liquid Q, the interaction, and in liquid P, whatever interaction is taking place in liquid P and liquid Q, so same interaction will be taking place in the case when we mix them. So there is interaction. So reason is not correct, assertion is correct. So assertion is correct, but reason is incorrect. So answer is going to be fourth. Coming to next one, question number 82. Among the species given below, the spin only magnetic moment is the highest for. So they have asked you the highest spin only magnetic moments. It's very simple. If we are calculating spin only magnetic moment, so it's very simple that we need to check number of unpaired electron. In whichever case number of unpaired electrons are greater, that will have the maximum spin only magnetic moment. Coming to first one, in first one, if I look at the first one, here it is titanium 3 plus, which is actually 3d1. So how many unpaired electron will be here? One unpaired electron is here. Coming to second one, which is actually manganese. So manganese here is 3 plus, which is going to be 3d4, and if we write it the configuration according to CFT, it is T2G and it is EG. So there are 4 electrons. So because in the presence of strong ligand it is going to be paired, so there are 2 electrons left here. So there are 2 unpaired electron in the case of
second one. Coming to third one, in third one we have Fe3 plus, which is actually 3D 5, and here in this case also, if we write down the configuration as T2G and EG, so here electrons are 5, so 1, 2, 3, 4, 5. So how many unpaired electrons are left? 1 unpaired electron is there. Coming to fourth one, which is cobalt plus 3, so this is 3D6, and here we will be left with no unpaired electron. Here also, if we write down the configuration, the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In T2G orbital, all the electrons are paired. So therefore, number of unpaired electron is greater in the case of second. So answer is going to be 2. Coming to next question, 83. A protein undergo reversible thermal denaturation from its initial state N to denaturated state D according to, so this is the equation given here. So from naturated state, a protein is getting converted into denaturated state at 60 degrees Celsius. The concentration of both N and D are equal at equilibrium, and question says that N and D are at equilibrium. The standard enthalpy change of denaturation is, so we are given with standard enthalpy change of denaturation is 666 kilojoule, and the standard entropy change, so we are asked about the standard entropy change. So it's very simple, we can delta G naught equals to delta H naught minus T delta S naught, which is actually, because in the case of equilibrium it is going to be 0, so delta H naught minus T delta S naught. So it comes out to be delta S naught equals to delta H naught by T. Delta H naught is given as 666 and temperature is 60 degrees Celsius, which we will convert it into, so this is going to be 333. So answer is going to be, so change in entropy, standard change in entropy is going to be 2 kilojoule per Kelvin per mole. So answer is 2. Now coming to next one, question number 84. Given below are two statements. One is labeled as assertion and reason. So assertion is given as generally 3D transition metal have higher melting and boiling point. Yes, it is true. 3D transition metals do have high melting point, because in the case of 3D transition metal, we have 3D and 4s orbital, which are very almost similar in energy. They have very less energy difference. Because of that, both electrons present in S and D involve in the lattice interaction. So therefore, interatomic forces, intermetallic atomic forces are very strong in this case, and therefore melting point is greater. So therefore both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation. So second will be the answer. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Now coming to 85, question number 85 given below. So assertion and reason again. The first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine, which is actually true. If I talk about ionization energy, so fluorine will have more ionization energy. Normally oxygen should have come here, but nitrogen, because it is half filled and it is not easy to remove electron from the nitrogen, so nitrogen's ionization energy is greater than oxygen. And what is the actual order? Actual order is fluorine, nitrogen and then oxygen. So first statement is correct. Second statement, the loss of an electron from oxygen leads to stable half-filled p orbital. Yes, it's true, because oxygen's configuration, valence electronic configuration is 2s2, 2p4. If I remove one electron, so this becomes 2s2, 2p3, half-filled orbital. Okay. In the case of, so it becomes stable half-filled p orbital. So both the statements are correct, but this second statement does not explain the first statement correctly, because the reason for the ionization energy of oxygen to be greater is mainly the repulsion between the electron, which makes it easier to remove the electron. So both the statements are correct, but reason is not the correct. So what will be the answer? Both A and R are correct, and R is not the correct explanation. So third one is going to be the answer for question number 85. Coming to question number 86,
very simple reaction is given. We are given with triple bond, and here we have H2PDC, Lindlar's catalyst, where we know that only one pi bond will be reduced and it gives mainly cis alkene. So cis alkene is going to be produced here, H and H. Then on HBr addition, it follows Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, we are going to get PH, CH, Br, CH, 2 methyl. Okay, again here we are using Birch, we are doing Birch reduction. In case of Birch reduction, we get what? Transform. So we have methyl here, we have PH here, H, and so this is transform and this is cis form. And there is only one option which says this K and L are geometrical isomers. Yes, here we are using HBr with H2O2. So here it will be anti-Markovnikov product, and product is going to be PH, CH2, CH, methyl, and with this we'll be having Br. But only one, this option is the correct. Now coming to next one, the highest occupied molecular orbital of neon. If we take the outer electronic configuration of neon, so this will be having 2p, 6 electron will be here. Again another neon, this neon 2p, and this is also neon atom. So if I take it, then we have here sigma 2p, then we will have pi 2px, pi 2py, and here we will be having pi star 2px, pi star 2py, and here we'll be having sigma star 2pz. So electron here will be 2, 2, 2, then here 2, here 2, and here 2. So they're asking the highest occupied orbital in neon will be sigma star 2p. Now coming to next question, they have asked you to match the following. So PCl5, it's very easy. It is a trigonal bipyramidal BRF5. There is one lone pair, 5 bond pair. So therefore it is going to be square pyramidal BF4 minus 4 bond pair and 2 lone pairs. Because of this minus charge, already there is one lone pair. So this is going to be square planar, and NiCN4 in the presence of strong field ligand, it is DsP2, which is actually going to be what? Your option will be A will be 3 and B will be 4, C will be 1 and D will be, C will be 1. C will be 1. So this is 4, this is this, and this is going to be square planar, and this is going to be tetrahedral. Okay, so this option is correct option, third option. Now coming to next question, match the following. So if we talk about vitamin A, so this is going to be 4, vitamin B12 is going to be in meat, between E, sunflower oil, and vitamin K in green leafy vegetables. So according to this, vitamin A is 4, A is 4, B is 1. So this is going to be correct also. Now coming to next one, last question. Here it is given as acylation. So first acylation will take place. So acylation will form you what? Acetophenone. Acetophenone, because of the presence of C double bond or CH3, it will undergo in the presence of NOCl. It is going haloform reaction. It is going haloform, undergoing haloform reaction, and in haloform reaction, we must have learned that it converts into sodium salt of carboxylic acid, and along with that we will get chloroform. Chloroform on oxidation, it converts into phosphazine, which is a poisonous gas. So fourth one is with the answer, because in this answer it is given as if P gives a carboxylic acid on acidification, Q gives a poisonous gas on exposure to air. So upon reaction we get acetophenone. Acetophenone, after reacting with NOCl, we get sodium salt of carboxylic acid, and along with that we are getting chloroform. Chloroform on oxidation produces a gas called phosphazine, which is a
poisonous gas. So this should be the answer. हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हम लोग फिजिक्स के 36 क्वेश्चन से लेकर 45 क्वेश्चन तक यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें ये इंडेक्स करेक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स करेक्शन। नाउ इंडेक्स करेक्शन इज द कैलिब्रेशन विच वी परफॉर्म ऑन द ऑप्टिकल स्केल और ऑप्टिकल बेंच। So, बोल रहा है ये which of the following requires index correction. So obviously measurement focal length of lenses using optical bench will require index correction. So this will have fourth as a correct option. Now let's talk about the next question. Next question is very easy. Kepler's third law, and we know that time period is basically proportional to r to the power 3 by 2. So it's direct formula. So the correct answer is third one. Now let's talk about the next question. Now consider sigma s, kb and b represent Stefan's Boltzmann constant, wind displacement law constant respectively. The dimensional formula sigma k minus kb minus 1 and b. It's very simple. You have to remember this formula, otherwise you have to calculate that. If you calculate the formula of sigma s, I mean dimensional formula of sigma s, kb minus 1 and b, and put in the equation, this equation, and solve it, then you will get the correct answer as second. So the question number 38, the correct answer will be second. Now let's, a ray of light with wavelength lambda incident on 3 different photoelectric cells, namely 1, 2, 3. The threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Remember that threshold wavelength are lambda 1, lambda 2 and lambda 3, and the incident wavelength is lambda. Now respectively, and the magnitude of stopping potential, remember that magnitude of stopping potential, so we will not to consider the negative sign. So we can write EV is equal to HC 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. You can use this formula. Now you can see that lambda 1 is less than lambda. It means threshold wavelength is smaller than the incident wavelength, so no photoelectron will be emitted. So emitted wavelength will be 0. Now here look at this. In these two cases, the threshold wavelength is smaller than the incident wavelength, so emission will be there. And since this lambda 3 is much larger than lambda, and lambda 2 is only larger than lambda, so you can say the threshold, I mean emitted photon electrons in this case will have more energy than emitted electron in this case. So stopping potential for lambda 3 will be greater than the stopping potential for lambda 2. So for lambda 1 there will be no photoelectron emission, so stopping potential will be 0. And the stopping potential for lambda 3 will be greater than the stopping potential of lambda 2. Now you can choose amongst this option and you will say the second one is correct. Now let's talk about the third one. One main scale division. See, we will consider this as a standard, I mean vernier calipers. So least count of standard vernier calipers will be 0.01 centimeter. And we can write L is measured length is, our actual length is equal to measured length, which is 1 centimeter, plus minus, here the, now listen, the 0 of vernier scale is left to the 0 of main scale. If the 0 of vernier scale is left to the 0 of main scale, then 0 error is negative. So we will take the negative 0 error instead of positive 0 error. And this is negative 0 error. Now 1 centimeter minus negative 0, least count is 0.01, and fourth division is coinciding. So simply 4 into 0.01. And if you solve this, you will get 1.04 centimeter, and this will be your answer. Now you can check the first option is correct in this question. Now let's talk about next. Next is very conceptual.
Since the charge is here, let's assume a positive charge. So some negative charge will develop at this point and some positive charge will develop at this point and they will move over here. So for the outside, we will consider the whole charge configuration situated at the center. So the field at B and field at C will be equal. Now, if you talk about the field at A, it will not be zero. Since this is not a cavity with a charge. So we have charge at this point. So at point A, the electric field not will be zero. So they're very simple. EA is not equal to 0 and EB is equal to EC. So EA is not equal to 0 and EB is equal to EC. Third is the correct answer. Now next, this is basically, don't get confused with the Giger-Mardensson experiment. This is basically Rutherford scattering experiment, and in Rutherford scattering experiment, we know that number of scattered particle is 1 upon sine to the power 4 theta by 2. So as you increase sine, number of scattered particle will decrease. And we know that this is a standard graph, everybody know that, and the answer is fourth one. Now let's talk about 43. This is a cyclic process and energy supplied, heat supplied is asked. Now we know that heat supplied will be here and here, dA and AB, but in the question they have considered the whole system for energy supplied, which they are asking about energy. So we know that delta Q is equal to delta U plus delta W. Since it is a cyclic process, so delta U will be 0. So delta Q will be delta W, an area of this. Now you can see this is from D to C, we have 3, and from D to A, we have 200. So that is 200 into 3, and that will give you 600 joule. So the energy supplied will be 600 joule, and the correct option will be fourth one. Two infinitely long parallel, very standard question. Two wires A and B carrying current I and 2I respectively in the same direction. So they will experience a force F is equal to mu naught I 2I over 2 pi H. And this force must be less than or equal to weight of the wire if you are not lifting that wire. If you don't want to lift that wire, that will be less than or equal to mass per unit length of the wire is lambda. And here we will take length also, and the force will be on the wire B will be mass multiplied by G, force due to gravity. See here, this is the attractive force and this is gravity force. This is magnetic force attractive and this is gravity. Mg will be lambda Lg, and obviously LL will get cancelled, and if you solve for H, then you will get here H is equal to mu naught I square pi lambda G. So the minimum height will be mu naught I square pi lambda G. So choose the option mu naught I square pi lambda G is the third option. So third option is the correct option. Now consider the spring mass system in one dimensional motion. They are asking basically about the velocity position equation. So we know that V is equal to omega under root A square minus x square. So V square by omega square is equal to A square minus x square. V square by omega square plus x square is equal to A square. We can write V square upon omega square A square plus x square upon A square is equal to 1. We know that this is the equation of the ellipse. But in question they are saying that this is a circle. It will be a circle if these two will be equal. So we can write omega square A square is equal to A square. So omega square is equal to 1 and omega is equal to k by m. So that will be k is equal to m. So in this you will have k is equal to m, and the correct option is the third one. So this is all about your paper discussion for the physics. I hope you will have enjoy the discussion. And one thing, the paper is a bit calculative and towards a tougher side.
So don't worry. If you score, I mean, you have solved 40 to 42 questions in physics, that will be a good marks. That will give you a good marks. So I hope you will have a good analysis and enjoyed it. Thank you very much.